after CAG captain Ankit Sharma won the toss and on a damp wicket said to Krunal Pandya, you bat first. They will open with Aman Khan, who is in top form, and joining Aman Khan in the center will be probably Siddharth Patidar, who opened with him earlier on. But we are of course live from the historic D.Y. Patil Sports Stadium, or the cricket stadium, on a road which leads you from Mumbai to Pune. With me in the commentator's box is Rajesh Khopkar. I call him Monty, his pet name. Aman Khan is the boy who's got loads of runs, 290 at a strike rate of 176.83. Good morning, Monty. We've got a wonderful day ahead, semi-finals and then the finals. Good morning, Milind. D.Y. पाटिल से मैं राजेश कुमार मोंटी आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अभिनंदन स्वागत करता हूँ। D.Y. पाटिल रेड बनाम CAG के बीच यहाँ पर मैच शुरू होने जा रहा है सेमीफाइनल का। सिद्धार्थ पाटीदार जो कि ओपनर है। Siddharth Patidar, who's got 97 runs in 3 innings at a strike rate of 164.41. They have a wonderful attack, the CAG team or the CAG team. They'll open with Rajneesh Gurbani, who's got 5 wickets in the tournament in 4 innings, an economy of 7.47. So when you talk, Rajesh, of the two teams out there in the center, CAG have Rajneesh Gurbani. They have their captain, Ankit Sharma, who has got 4 wickets in the tournament. And the 2 umpires in this match are Akshay Zambekar and Nikhil Patil. The 2 umpires in this match, with Ajit Gopal Krishnan being the match referee. Rajesh, 18th year of this tournament. DD Sports has been around for 17 years covering this event. Certainly a matter of pride, isn't it? निश्चित तौर से हम सभी के लिए ये गौरव की बात है, अभिमान की बात है। हमने अब तक 17 संस्करण देखे हैं मिलिंद, और ये जो 18वां संस्करण है ये भी अपने आप में एक बहुत ही अभिमानी बात कहलाता है। बहुत ही शानदार माहौल है। ये पहला सेमीफाइनल का मैच आप सभी के सामने संपन्न हो रहा है D.Y. पाटिल रेड बनाम CAG। CAG ने बहुत ही बेहतरीन खेलते हुए सेमीफाइनल में क्या कमाल का खेल खेला है, और D.Y. पाटिल ब्लू को परास्त करते हुए अपनी जगह सुनिश्चित की है। So if you want easy identification, Siddharth Patidar has got a shirt number of 10 and 36 is Aman Khan. Rajesh, it makes it's so simple these days to identify the cricketers. The first runs so important for any side in any tournament, right from your school days to college to the state and international side. You get the first runs, the confidence comes back. And you know, someone like Aman Khan, who's got 290 runs, he scored virtually in every match that he's played for D.Y. Patil. 81 in the first game, which they lost to Canara Bank. 89 against Income Tax, which they won. 80 against Bank of Baroda. Oh, that's a wonderful ball delivery there. Earlier on, we are still in the first over out here, and the early runs have now started coming in. The first run on the board there for Patidar.
That's Patidar, 97 runs in 3 innings at a strike rate of 127.27. We got 19 more overs, Rajesh. Certainly hot and humid conditions. We are in the confines of an air-conditioned box. Lucky us, isn't it? निश्चित तौर से आप धूप में खेलते हो और ये क्रिकेट का स्वरूप है। इस वक्त देखिए बहुत ही खूबसूरती के साथ इसे खेल दिया है। गेंद गई है मिड विकेट सीमा रेखा के बाहर और ये पहला चौका, शानदार शुरुआत। How quickly he lashed onto that ball, which of course was the last ball of the over. So after the first over, D.Y. Patil batting first are 6 without a wicket, opening with Aman Khan and Patidar. The wonderful pavilion on the far side of the D.Y. Patil Stadium. That's the last one from Gurbani, hiking it, not middling it well, Rajesh, but nevertheless, in a T20 game, 4 runs are very important. जो पावर प्ले है उसका बहुत ही सही फायदा उठाया और बढ़िया शानदार तरीके के साथ इसे गेंद को निकाल दिया था। सीमा रेखा के बाहर गेंद चली गई थी, 4 रन मिले हैं। अच्छी शुरुआत कहूंगा, ये पहला ओवर है। सोलह टीम्स इस प्रतियोगिता में खेल रहे थे, 4 ग्रुप्स थे। शिखर धवन, दिनेश कार्तिक, हार्दिक पांड्या, ईशान किशन, युजवेंद्र चहल, मनीष पांडे, ये जो सारे प्लेयर्स जो इस टूर्नामेंट्स में खेल रहे हैं, T20 में खेल रहे हैं, इन सारे नामी गिरामी खिलाड़ियों ने इस टूर्नामेंट की शोभा बढ़ाई है मिलिंद। So the second bowler on view for the CAG is Sayan Ghosh. I like his number 10 for Sayan Ghosh. Monty, we've had the number 10 occupied by, or the pride of place for not only cricketers but footballers as well, all over the world. निश्चित तौर से अगर हम थोड़ी देर के लिए मिलिंद क्रिकेट के साथ साथ फुटबॉल की बात करें तो फिर पेले साहब याद आते हैं, मैराडोना याद आते हैं, गैरी लिनेकर याद आते हैं, मेसी याद आते हैं। Obviously, D.Y. Patil led by Krunal Pandya, loads of experience, Monty. On the other hand, when you look at the CAG side, I just mentioned about their batting side a little later. Varun Lavande, who's got 188 runs. Sachin Baby, once again a national player. Oh, earlier on in the innings, you tried to play that stroke. You could be asking for trouble. Siddharth Patidar, he's got runs. Monty, the batting side, they are the host out here. They may be wonderful hosts, but on the field, they are a very stubborn lot. But this delivery, so very lucky there, wasn't he? आगे निकल कर आए थे, उठाकर मारने की कोशिश की थी, लेकिन ठीक तरह से गेंद को कनेक्ट नहीं कर पाए। That's a brilliant stroke. That's a brilliant stroke earlier on. One top and into the fence she goes. The second 4 of the innings out here. How I wish this is a wonderful Saturday morning. It's hot, so what? There's hot cricket out here. That's important. निश्चित तौर से मिलिंद, देखिए ये गेंद जो कि मिल गई उन्हें और बहुत बढ़िया कनेक्शन, लाजवाब टाइमिंग के साथ इसे खेल दिया था मिड विकेट के दिशा पर। बहुत अच्छा शॉट। Second time that he wants to get the runs for his side. A second will always be on. Excellent calling there by the two. They played together for a long, long time, Monty. This combination of Aman Khan and Siddharth Patidar. And when you have played together for a long time, it's so easy to communicate so well. मिलिंद थोड़ी देर पहले ये देखिए एक्शन रिप्ले में किस तरह से इसे खेला था। अच्छा फुटवर्क,
बढ़िया टाइमिंग के साथ गेंद को डिपॉजिट किया था सीमा रेखा के बाहर। पिच की अगर बात करें तो दक्षिण अफ्रीका की मिट्टी और रेत से इस पिच को बनाया है। बिल्कुल एक अच्छा उछाल और गति प्रदान करती है ये पिच, और बल्लेबाजों को रन बनाना आसान होता है। और अगर मिलिंद गेंदबाजों की भी बात करें तो पेसर और स्पिनर इस पिच पर अच्छा कमाल का काम करते हैं। So that's the end of the second over, after which D.Y. Patil, the Reds as I call them, the Reds, a favorite color of two big sides in the English Premier League, Liverpool and Manchester United, but we'll stick to cricket today with 13 on the board after 2 overs. The combination of Aman Khan and Siddharth Patidar. Aman Khan 4 of 5 and Patidar 7 of the same number of deliveries. युवा प्रतिभाशाली सितारों के साथ साथ अत्यधिक अनुभवी क्रिकेटर्स इस T20 क्रिकेट टूर्नामेंट में खेल रहे हैं। CAG, वरुण लवंदे, आर संजय, सचिन बेबी, एस सेनापति, सनवीर सिंह, चैटर्जी, मंदिर सिंह इस वक्त से खेला है। बहुत अच्छा, बिल्कुल देखिए गैप में खेला, गेंद चली गई सीमा रेखा के बाहर, मिलेंगे 4 रन। Yes, he lashed on to that delivery from Rajesh Gurbani so quickly. Was pitched short on the middle and off stump. Made sure that he got the room, got the width there, and then played it in a vacant gap. You must always remember that the first 6 overs with the field restriction on in a T20 game, it becomes fairly easy. 17 without a wicket. Patidar with that 4 up to 11. It's a wonderful run-up he has. And second time, how quickly he gets on top of the ball out there. He used the pace of delivery to his advantage. No, he's dropped it, I think. What a try that was. Would have been a super catch. Wouldn't it have been, Monty? देखिए जो प्रयास किया गया था उसे 100 में से 100 मार्क्स देने चाहिए। गेंद जो मिली थी शॉर्ट ऑफ लेंथ थी और इसे ठीक तरह से नहीं खेल पाए थे। शॉर्ट ऑन पुल, बेबी हुक किया था, और ये देखिए ये प्रयास है, बिल्कुल अपने आप को झोंक दिया था। स्कूबा डाइवर जिस तरह से डाइविंग लगाते हैं और बेनजीर रतन पाते हैं ना, वो कोशिश की थी। कोशिश को प्रणाम है। So Monty moves from a cricket stadium to the oceans, scuba diving. But that's what cricket fielding is all about. You got to get everything out of the bag. 32 for 1. सेमीफाइनल से फाइनल में आपको अपनी जगह सुनिश्चित करनी है तो एक नीति के साथ, रणनीति के साथ मैदान पर योजना, प्लान के साथ खेलना होगा, लक्ष्य देना होगा। देखिए टॉस जीतने के बाद CAG अंकित शर्मा कप्तान है, फील्डिंग करने का फैसला किया है, तो प्रमुख स्तंभीय गेंदबाज उनके पास हो गए। और आपने देखा कि एक बहुत जल्दी अमन खान को भी उन्होंने पैवेलियन में लौटा दिया है, तो निश्चित तौर से वो दबाना चाहेंगे D.Y. पाटिल को। D.Y. पाटिल रेड ने बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया है इस क्रिकेट टूर्नामेंट में।
अब्दुल समद जो उनके बेहतरीन बल्लेबाज है, और अब्दुल समद के बेहतरीन बल्लेबाजी के बलबूते पर ही डिफेंडिंग चैंपियन रिलायंस वन को डीवाई पाटिल रेड ने परास्त किया है। The essence of good T20 cricket is keeping your eye on every single run that comes your way, and which is what D.Y. Patil have been doing. 34 for 1. Lost the important wicket of Aman Khan. It was one good catch it was by Senapati. क्या मिलिंद इस बात को रिवेंज कहा जाएगा, क्योंकि सीएजी ने डीवाई पाटिल ब्लू को परास्त किया है? Well, I think revenge surely is the order of the day, but make the difference between the earlier round and the semi-final. Don't play for revenge, play for pride. I think that's the word. That's the word, yes. Play for pride is what the two teams are doing. End of the over there, 34 for 1 after 4. मिलिंद, जब भी ये आंकड़ा आ जाता है ना 4 और 34, तो मुझे वो बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच जो खेला गया मैच 434 जो रिकी पॉन्टिंग की टीम ने बनाए थे। देखिए ये शॉट जो खेला गया था, इसे बेबी हुक किया गया था, मिस टाइम शॉट था, और ये प्रयास देखिए अपने आप को बिल्कुल झोंक दिया। तन तर्पण मन दर्पण, क्रिकेट के खातिर सर्व समर्पण। I love the Hindi commentators using some wonderful adjectives out here. Makes your Saturday with these flowery languages. So we now here for a fresh over the bowling change. Sanveer Singh replaces Rajneesh Gurbani. Sanveer Singh, who's got बिल्कुल विड्थ मिली, शॉर्ट एंड विड्थ, परफेक्ट रेसिपी फॉर बैट्समैन। बीट किया कवर के खिलाड़ी को, गेंद चली गई सीमा रेखा के बाहर। शानदार, बहुत बढ़िया, लाजवाब खेलते हुए पाटीदार। पाटीदार पहुंचे 31 पर। नीतीश राणा जो उनका साथ दे रहे 6 रनों पर खेल रहे हैं। डीपीआर 48, 1 विकेट के नुकसान पर। 5 ओवर्स यहां पर समाप्त हो चुके हैं। फील्डिंग में थोड़ा परिवर्तन किया जा रहा है। जो स्वीपर में खिलाड़ी थे उन्हें स्क्वायर थर्डमैन पर लाया जा रहा है। रजनीश, ये गेंद अच्छी थी, ये गेंद अच्छी थी, बिल्कुल पैरों पर थी, सम्मान दिया, हल्का सा खेल दिया। So what they've actually done is to make sure that they rotate the bowlers. Rajneesh Gurbani is with that spell of 1 for 17 is now come back from this side, replacing Sayan Ghosh. और नीतीश राणा ने इसे निकाल दिया है। बिल्कुल लॉन्ग लेग पर गेंद चली गई है और फील्डर इसे नहीं रोक पाए। 4 रन मिलेंगे और इसी के साथ
टीम अपना अर्धशतक पूरा करती हुई नजर आ रही है। सिद्धार्थ पाटीदार और नीतीश राणा दोनों बहुत बढ़िया खेल रहे हैं। गेंद जो कि लेग स्टंप के थोड़ी बाहर थी, बिल्कुल फ्लिक ऑफ द रिस्ट और आधा लेग ग्लांस स्ट्रोक मिश्रण देखने मिला। फील्डर को दौड़ना पड़ा, लेकिन गेंद तेजी के साथ सीमा रेखा के बाहर चली गई। 52 स्कोर हो चुका है। So except for that wicket which Rajesh Gurbani has got, runs are coming by the thick as far as D.Y. Patil Reds are concerned. They're now speeding. They're speeding to a total which they want so badly, 52 for 1. What a shot this was. The left-hander Nitish Rana was played earlier on for a number of sides. Loads of experience. He now leads Uttar Pradesh in the Ranji Trophy. Led Delhi earlier on. And here today for the D.Y. Patil Reds. Fast bowler played for Mumbai. Abid Mushtaq, the new bowler. And they can't beat the two fielders there. Well placed. And Abid was saying a total of 180 should be a good competitive total on this wicket. बिल्कुल मेरे मन की बात बोली मिलिंद। मैं कह ही रहा था कि एक दौर था, अगर हम 10-15 साल पहले देखें तो स्कोर 140 150 वो भी एक अच्छा फाइटिंग स्कोर हुआ करता था। लेकिन आज जिस तरह से बैटर्स खेल रहे हैं, बिल्कुल आनंद फानन में ताबड़तोड़ आक्रामक बल्लेबाजी करते हैं, तो आपके पास 200 रन्स होंगे तो भी आप सुकून की चैन की नींद नहीं ले सकते हो। आपके पास एक अच्छा लक्ष्य होना चाहिए। ये नए गेंदबाज आए हैं अबीद मुश्ताक, और जो बाएं हाथ के गेंदबाज होते हैं ना, वो दबाते हैं बैटर को। तो क्या यहाँ पर नीतीश राणा को दबाया जाएगा? हालांकि नीतीश राणा ने अपना हल्ला बोला है, अपना बल्ला खोला है। That's a better delivery. Keeping the batsman quiet, that's what they will have to do. 62 for 1. We are now into the 7th over. Yes, the run was there. It was a good call from the non-striker's end. Patidar, very watchful, just turned round and told Nitish Rana, let's scamper through. The run is going to be important. Soft hands, got the width, got the position and got that important run. बिल्कुल नजाकत के साथ खेला था नीतीश राणा ने। पावर प्ले समाप्त हो चुका है, फील्डर फैले हुए हैं, तो अब जाकर गैप ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल होगा। देखिए ये गेंद थोड़ी सी लो फुल टॉस थी, इसे कवर की दिशा में खेला, फील्डर है, तो अब जाकर क्रिकेट के जो सारे रंग है ना मिलिंद, वो देखने मिल रहे हैं। You know, you're talking of a score in excess of 200 to be competitive. If you look at D.Y. Patil, 174 for 7 in the first match, 170 for 3 in the second, 135 in the third. More runs for the asking for D.Y. Patil Reds. And then they got 189 for 4, chasing 188. So they've been in that 180 plus bracket. निश्चित तौर से पावर प्ले में हमने देखा कि 61 रन बनाए थे, बेहतरीन खेले थे सिद्धार्थ पाटीदार, सिर्फ एक विकेट गवाया था, और अब जाकर नीतीश राणा और सिद्धार्थ पाटीदार अपने टीम के लिए बढ़िया खेल रहे हैं। देखिए 19 गेंदों में 33 रन बनाए हैं और 6 चौके लगाए हैं।
एक बहुत बेहतरीन स्टेडियम डीवाई पाटिल स्टेडियम, जहां पर आईपीएल के कई सारे मैचेस खेले गए हैं। महिलाओं के वर्ग में T20 संपन्न हो चुका है और फुटबॉल भी खेला जाता है। So that's a wonderful view of the D.Y. Patil. Aman Khan was the first to go, the only wicket caught by Senapati of Rajneesh Gurbani for 8. After all the hard work that is done in the earlier rounds. And that's what cricket, Monty, teaches you. It's a great leveler. 290 runs, 89, 81 and 80. And he finally had to fail someday. And that day was today. नीतीश राणा के लिए अब चैटर्जी को लाया गया है। ऋत्विक चैटर्जी। उनकी ये गेंद बिल्कुल हल्के हाथों से खेला, देखा कि फील्डर काफी डीप में है और चहलकदमी करते हुए एक रन भी पूरा किया है। He's got 8 wickets in this tournament at an economy of 6.38. They would so surely bank on the off spin of Ritwik Chatterjee to make sure that they keep the D.Y. Patil, the two batsmen, in full cry. Keep them quiet, get the wickets, get the runs down. Monty, the moment you keep a batsman not getting to score, frustration starts creeping in. You start getting desperate. And that's where the wickets start coming in. That's what D.Y. Patil will have to be wary about. नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि अब देखिए पहले जो पेसर थे वो गेंद मिल रही थी, बैट पर आ रही थी, टाइमिंग हो रहा था। अब स्पिनर है तो थोड़ा सा उनकी जो स्पिन है उनका आकलन करते हुए ये दोनों बैटर खेल रहे हैं। 9.14 the average. It'll keep on going up there. This boy, he's got a huge experience. And that's all the experience that he's getting into play out here. How quickly he's moved to 27, Nitish Rana. You know, all that experience of his, Delhi, Uttar Pradesh, IPL, T20, is all coming handy out here. कितने जल्दी पोजीशन में आए, पहले से ही मन बना लिया था कि गेंद किस तरह से भी आए, स्पिन managed to get some important runs. They now move up to 80 for 1. Nitish Rana 33 of 21, his partner 35 of 22. Yes, keep a sight of that delivery is the important mantra in the game of cricket. There's current run rate a little over 9. And we keep on mentioning repeatedly that on this wicket, which had dampness, Monty, Ankit Sharma perhaps might look back and say that yes, there is a dampness in the wicket, or there was a dampness in the wicket. Did I do the right thing of choosing to field first? निश्चित तौर से अब जाकर लग रहा है कि अंकित शर्मा ने जो फील्डिंग करने का फैसला किया है वो सच होता हुआ नजर आ रहा है। पहले पावर प्ले में रन्स बहते हुए नजर आए थे, लेकिन अब फिरकी गेंदबाज है जिन्होंने रनों को रोका है, लेकिन यहां पर नहीं रोक सकते। ऐसा लग रहा था कि नहीं रोक सकते, लेकिन देखिए क्या हुआ है वहां पर। लेग स्टंप के बाहर गेंद थी और इसे डिपॉजिट करना चाहते थे,
फाइन लेग के सीमा रेखा के बाहर, लेकिन टाइम गलत हुआ और बहुत बेहतरीन विकेट मिल गई अबीद को अपने अंतिम गेंद पर। लेफ्ट हैंडर नीतीश राणा इसे निकालना चाहते थे, लेकिन जो खिलाड़ी मौजूद थे शॉर्ट फाइन लेग पर बहुत अच्छा कैच लिया गया। एक बड़ा विकेट नीतीश राणा, 23 गेंदों का सामना किया, 34 रन बनाए अपने टीम के लिए। Caught by Ritwik. That's not an easy position to field, because remember the ball is dipping into you. You do not know the trajectory that it's taking. And some wonderful bowling by Abid Mushtaq there. You know, just a few minutes back, Monty, you did mention the spinners have kept the batsman quiet. And that's why I said frustration starts creeping in when the runs don't coming in. And that's the reason why Nitish, I think, played that stroke to make sure that he got out of the shackles. और अब आए हैं मैदान पर कृणाल पंड्या कप्तान, डीवाई पाटिल रेड के कप्तान, और लेकिन खेलेंगे सिद्धार्थ। तो सफलता मिली है अबीद को अपने अंतिम गेंद पर, जो कि लेग स्टंप के बाहर थी, उसे निकालना चाहा, डिपॉजिट करना चाहा फाइन लेग सीमा रेखा के बाहर, लेकिन ठीक तरह से जमीन पर नहीं रख पाए और वहां पर ऋत्विक ने बहुत अच्छा कैच लिया था। So after taking that catch, the captain tells Hrithik Chatterjee, it's your turn to bowl. He's got none for 14 of the one over that he sent down. But that wicket earlier on certainly would gladden the hearts of the CAG side. Runs were coming by the thick for D.Y. Patil Reds. They're now up to 83. Krunal Pandya has not been amongst the runs, 35 in 3 innings at an average of 125, at a strike rate correction of 125, average of 11.67. So what do they say, Monty? Form is temporary, class is permanent. हर हमेशा हम यही बातें कहते हैं क्रिकेट में। 80 के दशक में हमने सुरिंदर अमरनाथ और मोहिंदर अमरनाथ देखे, और आज के दशक में कृणाल पंड्या और उनके भाई हार्दिक पंड्या को देखते हैं। दोनों भी इस टूर्नामेंट की गरिमा बढ़ा रहे हैं। अपना खाता खोला इस वक्त कृणाल पंड्या ने। एक अच्छा मैच यहां पर संपन्न हो रहा है। Krunal Pandya, who plays for Baroda and the Lucknow Super Giants. If you recollect, he had the fastest ODI century in ODI on debut. The T20 debut versus Sri Lanka in 2018. Now, is that trouble? No, it's lucky there. Lucky to pick up those fours. Siddharth Patidar, he's been in fine nick. He's been the pillar for them at the fall of Aman Khan's wicket. He's also playing some innovative strokes. He knows that that's a ball which he needs to capitalize on. And how well he does it, Monty. फिर से एक बार बहुत जल्दी पोजीशन में आए और इंतजार किया और गेंद को आने भर दिया, और मिडलिंग बहुत बढ़िया थी। गेंद को भेज दिया सीमा रेखा के बाहर। इसी तरह से खेलना होगा सिद्धार्थों को, क्योंकि अब जो नीतीश राणा है वो चले गए। यहां पर उठा दिया, बहुत बढ़िया गेंद सीमा रेखा के बाहर, लाजवाब स्ट्रोक। लगातार दूसरी गेंद पर हल्ला बोल दिया। बेहतरीन खेलते हुए दाएं हाथ के ये बैटर अपने टीम के लिए। गेंद सीमा रेखा के बाहर, 4 रन। So one an innovative stroke and the second straight out of the book. 92 for 2 and more runs for the asking there. I'm sure Patidar would tell himself, although that was the last ball of the over. So after 10 overs, halfway stage, D.Y. Patil batting first on 93 for 2. ये देखिए किस तरह से रन्स बने हैं डी.वाई. पाटिल रेड के। कुछ ऐसे ओवर से जहां पर 13-14 रन्स भी आए हैं, जब पाटीदार और नीतीश राणा खेल रहे थे और उन्होंने हल्ला बोला था, चार्ज किया था, बिल्कुल गेंद पर हावी हो गए थे।
3 ओवर्स हमें ये देखने मिले हैं कि जहां पर 13 रन बने हैं डीवाई पाटिल रेड के सीएजी के खिलाफ। मैच नंबर 30 सेमीफाइनल का ये पहला मैच है। 10 ओवर यहां पर समाप्त हो चुके हैं, 93 रन बने हैं, 93। तो क्या अगर इसी औसत के साथ खेलेंगे तो डीवाई पाटिल रेड 190 200 का आंकड़ा पार लेगी अथवा नहीं, ये देखना होगा। लेकिन जिस तरह से सिद्धार्थ पाटिल खेल रहे हैं मिलिंद, हो सकता है कि 190 200 हमें देखने मिले। So the captain now comes up here, Ankit Sharma, and straight away, Divai Patil get into the act. Patidar, oh what a knock he's played out here. And he's now got the coveted half century, the dream of every cricketer at any level. What a 50 this has turned out to be, and particularly Monty, at a time when they lost Aman Khan earlier on. बहुत ही बढ़िया खेल रहे हैं सिद्धार्थ पाटीदार। ये देखिए 28 गेंदों में 50 रन, आगे निकल कर आए और उठा दिया। क्षेत्ररक्षक है लेकिन गेंद को लाना पड़ेगा। बहुत बढ़िया शॉट, बिल्कुल उनके पास जो बैट है वो बैट नहीं गन है, रॉकेट है, 6 रनों का पॉकेट है। I wonder what Patidar had for breakfast this morning, but I'm sure whatever he's had was very nourishing, and it can all be seen by the strokes that he's played. What I like about him is he's played innovative strokes and he's played 90% from out of the book. So the mantra is T20 is all copybook cricket also. बिल्कुल T20 में खेलना है मिलिंद तो आपको पुस्तक की शैली से खेलना भी है और पुस्तक के बाहर के सारे शॉट्स भी खेलने हैं। इस वक्त देखिए निकाल दिया गेंद को, फील्डर है वहां पर मौजूद, एक ही रन मिलेगा। लेकिन जिस तरह से सिद्धार्थ पाटीदार ने स्ट्रोक खेले हैं लाजवाब, बिल्कुल बैकफुट पर जाकर इसे खेला था, प्रहार बहुत अच्छा किया था लेकिन गैप नहीं ढूंढ पाए। So 104 for 2 here for Divai Patil. Runs coming by the thick. They're quite open there to make sure that they get the ones and the twos. Don't wait only for the fours and the sixes. What do they say? Drop and drop. Slashes this one, using his wrist so well. The captain, he knows that the runs have to come from him. 35 in the last 3 innings. Today perhaps could be his day. बहुत खराब गेंद थी, ऑफ स्टंप के काफी बाहर, ज्यादा विड्थ मिली, सहजता के साथ, आसानी के साथ बहुत बढ़िया शॉट खेला। You know, Monty, when you're looking at him running for the first run so quickly, reminds me of Virat Kohli and MS Dhoni. The first run, take it quickly, put the pressure on the fielder. The second run is always easily possible. निश्चित तौर से इस 22 यार्ड की विकेट पर आपको तेजी के साथ ही दौड़ना है। और देखा कि आपने जो खिलाड़ी है डीप में है, पहला रन काफी तेजी से लिया और दूसरे रन के लिए आंखों आंखों में इशारा किया, पूरा किया। 2 विकेटों के नुकसान पर डीपीआर 121, 121 रन, 12 ओवर यहां पर खत्म हो चुके हैं। And you know, when you're talking of Krunal Pandya, very few people or very few cricketers from India get an opportunity to play in the English county. He has been one of them, played for Warwickshire in the English County Championship. ये देखिए एक्शन रिप्ले में किस तरह से ये दूसरा रन तेजी के साथ लिया गया था, थोड़ा सी मिसफील्ड, और तीसरा रन भी लेना चाहते थे लेकिन फिर अपने आप को रोका। ये है डीवाई पाटिल स्टेडियम, दुनिया के जो बेहतरीन स्टेडियम्स है उनमें से एक है और भारत की शान बढ़ाते हुए नजर आ रहा है ये डीवाई पाटिल स्टेडियम। You know, when you talk of the Divai Patil Stadium, I have a lot of emotions because it was way back in the first tournament that I
was fortunate to do the commentary out here. The first essay 20 years ago, this stadium wasn't even there. You were there. That's right. You were there. निश्चित तौर से आईपीएल जो सन 2008 में शुरू हुई थी और हमने तो 2006-07 में इसी स्टेडियम में बहुत सारे क्रिकेट की टूर्नामेंट की हमने कमेंट्री की है और डीडी स्पोर्ट्स के माध्यम से आज भी डीडी स्पोर्ट्स के माध्यम से इस टूर्नामेंट को कवर किया जा रहा है और सेमीफाइनल का ये पहला मैच आप सभी के सामने संपन्न हो रहा है। डीपीआर ने बनाए हैं 2 विकेटों के नुकसान पर 121 रन। When you're landing into Mumbai, runway 27 at Sar International Airport, and if you're lucky to sit on the left-hand side, you see a jewel in the crown. That's the D.Y. Patil Stadium. Fresh over. Sanveer comes back, runs again, start coming in. This is the time of the day. It's now or never. Ab nahi to kab. अभी नहीं तो कभी नहीं। सनवीर का स्वागत किया, बिल्कुल डाउन द ग्राउंड शॉट, बढ़िया शॉट। देखिए कदमों का किस तरह से इस्तेमाल किया, नीचे उतर कर आए और ट्रिगर मोमेंट होता है ना, वो देखने मिला और गेंद को डिपॉजिट किया बिल्कुल सीधे लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ के बीचों बीच सीमा रेखा के बाहर 6 रन मिले हैं। Another one there by the thick. Nothing is stopping this young boy from getting into the act. And how quickly, look at 2 different sides of the ground. First a straight one, and then he pulls the second one. That's a better stroke. That's the man in form. बिल्कुल अपना रवैया बदला है, टॉप गियर में अपने बल्लेबाजी को लेकर गए, बहुत अच्छा आ रहे हैं। सिद्धार्थ पाटीदार और कृणाल पंड्या अपने टीम के लिए दोनों बढ़िया खेल रहे हैं। 2 विकेटों के नुकसान पर डीपीआर 133 पर खेल रहे हैं सिद्धार्थ पाटीदार। क्या करेंगे सनवीर? किसी भी मीडियम पेस गेंदबाज के पास होता है अस्त्र, यॉर्कर, और ये देखिए बहुत ही सुंदर, बिल्कुल आंखों को लुभावित करने वाला यह स्ट्रोक था, स्ट्रेट ड्राइव। I wonder whether you've been a student of geometry. The angle, perhaps you needed a set square to decide what it was, as straight as they say, like Arjun's arrow. निश्चित तौर से जो हम ज्योमेट्री में उपकरण यूज करते थे वो भी गलत हो सकता है, लेकिन ये जो शॉट खेला है वो कभी गलत नहीं हो सकता। सिद्धार्थ पाटीदार बहुत बढ़िया लाजवाब खेलते हुए। He's played strokes all parts of the ground. He's played a straight drive. He's lifted one straight. He's played the hook stroke. And he's used his feet well to play through mid-wicket. 138 for 2. Patidar 77 of just 38. Krunal Pandya 15 of 7, the captain. And I wonder if Megha does an interview during the break, she might be tempted to ask Siddharth Patidar, sabere नाश्ते में क्या खाया था? 77 रन्स सिद्धार्थ पाटीदार और यह है कृणाल पंड्या कप्तान। अब जाकर खुश होंगे, 15 रनों पर खेल रहे हैं। ये गेंद राइजिंग डिलीवरी, और अब देखिए अंपायर के पास पूछ रहे कि क्या ये वाइड नहीं है। कंधों का अच्छा इस्तेमाल किया था सनवीर ने। सनवीर थोड़े महंगे साबित हुए हैं इस ओवर में, और यही वजह है कि वो थोड़ा सा वेरिएशन करना चाहते हैं। कृणाल पंड्या, उनके लिए जो फील्डिंग सजाई गई है, थर्ड मैन पर खिलाड़ी बाउंड्री लाइन पर है, एक गली में, एक पॉइंट में, एक कवर पर खिलाड़ी खड़ा है और एक खिलाड़ी 30 यार्ड सर्कल पर मिड ऑफ पर है। Oh, that's a beauty. Rattled the batsman, but still conceded a wide. Rightly so. Some very good umpiring out here. Very watchful. 139 for 2. Sanveer, none for 32. Off 2. You know, you just have a particular day which is not your day at office. And today, that's the day for Sanveer. इस ओवर में उन्हें लगातार 2 मरतबा बाउंड्री लाइन के बाहर भेजा गया, और ये देखते हुए उन्होंने जो बाउंसर छोड़ी है, पहले बाउंसर को तो
काउंट किया नहीं गया, लेकिन दूसरी बाउंसर वाइड डिक्लेयर की गई है। Well, Krunal Pandya making sure that he wants to give the strike as much as possible to Patidar. That's a good ploy. Ending over number 13, 140 for 2. Partnership now. You know, before you said 1, 2, 3, before you blinked your eyes, the partnership is 56. Did you realize that? मिलिंद, मैं हमेशा कहता हूं कि किंतु परंतु यदि अगर मगर काश नहीं करते और कुछ कर है ना कि राख के नीचे आग दबी हुई होती है। तो ये देखिए, बहुत बढ़िया हुक शॉट खेला और गेंद को भेज दिया दर्शक दीर्घा में। 6 रन मिले हैं। बहुत अच्छा शॉट, लाजवाब। He's a tall lad, 6 feet 1 inches tall. When I went and did an interview with him at the toss, he turned round. I had to actually look up to him. 6 feet 1 inches is a huge man, tall man. How well he got on top of the ball there. 148 for 2. Using his wrist well. Sachin Baby, is it? Yes, Sachin Baby, who an experienced cricketer. End of the 14th over. After 14, batting first, D.Y. Patil, 149 for 2. So the 2 wickets to fall. Aman Khan for 8. Nitish Rana for 34. 78 unbeaten is Patidar. And his captain, 24. A wonderful partnership which D.Y. Patil will reflect back. Get them 200. The bowlers will say, thank you so much. दर्शक भारी तादाद में अब स्टेडियम में हमें देखने मिल रहे हैं। जहां जहां मौका मिल रहा है वहां वहां पर अपने सीट को उन्होंने कंफर्म किया है। I'll tell you, in the evening, we might have a much bigger crowd. It's a Saturday evening. Becomes a picnic here at the D.Y. Patil. एलबीडब्ल्यू की अपील की गई है और इस बीच एक रन भी पूरा किया है। अबिद मुश्ताक, अबिद जब भी आए हैं उन्होंने जो गेंदबाजी की है, खास करके वो क्रीज का अच्छा इस्तेमाल करते हैं मिलिंद, और जो गेंद करते हैं ना वो आई लाइन पर करते हैं, तो बल्लेबाजों को थोड़ी सी दिक्कत वहां पर नजर आ रही है। The current run rate 10.64, which would get them to 215. Abid Mushtaq, who's got a wicket there. That was the last wicket of Nitish Rana. And out here, 150 for 2. Patidar 78. And that's the one which they wanted so badly. That's the one which they wanted so badly. जिस विकेट की तलाश थी वो विकेट मिल गई है। सिक्सर मारने गए थे लेकिन एलिवेशन दे बैठे। देखिए बहुत बढ़िया खेला है। जी अभिवादन कर रहे हैं सिद्धार्थ पाटीदार। 40 गेंदों में 78 रनों की शानदार पारी खेली है। लाजवाब खेल खेला है। बिल्कुल दर्शनीय स्ट्रोक्स लगाए थे और अपने टीम को एक मजबूती दी है पाटीदार ने। So Varun Lavande, the fielder who lashed onto that catch right on the deep, just below the far side. And that's the wicket which was so badly wanted for the CAG. Played a cross-bat stroke. Didn't middle it well. Skyer there. Cupped it well. That's not an easy catch to take, particularly when it's coming in from the heavens. The sun beating down on your eyes. And he lashed onto it beautifully to get an important wicket.
बहुत बिल्कुल सच कहा मिलिंद आपने, ये कैच इतना आसान नहीं था। बैटर ने जिस तरह से स्ट्रोक खेला था क्रीज में, देखिए आपके उनके जो फुटवर्क था वो नहीं था, लेजी फुटवर्क, और खड़े खड़े रहकर यहाँ पर हवा में खेल दिया था। गेंद काफी ज्यादा देर तक आकाश में रही थी। अब जो मैच हमने देखा था खिलखिलाती हुई धूप में शुरू हुआ था, अब कड़ी धूप नजर आ रही है और कड़ी धूप में भी क्रिकेट अपना बेहतरीन स्वरूप, देखिए ये खेला था शॉट, और गेंद बहुत ज्यादा देर तक आकाश में थी और क्षेत्र रक्षक, जी हाँ, वरुण लवंद ने बहुत अच्छा कैच लिया, बढ़िया फिनिश किया, तो सफलता मिली है अभी मुश्ताक को। अभी भी एक ऐसे गेंदबाज है जिन्होंने 2 विकेट्स प्राप्त की है। So Abdul Samad is the new batsman. 3 innings, 79 runs, an average of 79, a strike rate of 164.58. This is the time of the day when CAG perhaps might say we might get back into the game. मिलिंद अब्दुल समद को खेलना होगा। अब्दुल समद के बेहतरीन बल्लेबाजी के बलबूते पर ही डीवाई पाटिल ने रिलायंस 1 को परास्त किया था। देखिए यहां पर गेंद को निकाल दिया है, गेंद जाएगी सीमा रेखा के बाहर, एक अच्छा शॉट, मच नीडेड बाउंड्री, 154 स्कोर। बिल्कुल इंतजार किया और अंतिम वक्त पर बहुत अच्छा खेला, जो गैप था स्लिप और गली में उसे ढूंढ लिया, और जो गति थी ना उसका फायदा उठाया मिलिंद। आउटफील्ड फास्ट, गेंद चली गई, नहीं रोक पाए फील्डर, 4 रन मिले। Yes, that was the match on the 7th of March when D.Y. Patil got the better of Reliance 1. Abdul Samad 49 unbeaten important runs. They might have to settle for a few singles in this over and perhaps the over after this. But they seem to be inching. End of the 15th over, 155 for 3. They're still the current rate 10.33. So at that average of 10, with 5 overs to go, they should be eyeing 200 runs. You know the difference between 180, 190 and 200. If you look back on some of the earlier matches, they've all been close matches. T20 is all about close matches. 2 runs, 1 run, 5 runs. So those 10 runs make a huge difference. हर हमेशा हमने देखा है कि आखिरी ओवर होता है, 15-16 रनों की जरूरत होती है, और तब जाकर बैटर बहुत बढ़िया खेलते भी है, आकर्षक ऊंचा लंबा शॉट्स खेलते हैं, लेकिन फिर मैच में वो परास्त होते हैं तो सिर्फ 1 रन से, 2 रन से। तो इसीलिए अब्दुल समद जो नए बैटर आए हैं उन्हें खेलना होगा, और पिछले मैच में यही हीरो बन गए थे अब्दुल समद। So Sanveer Singh comes from this side. None for 33 in 2. He's been expensive. बैटर के लिए 185 for 3. Hoiks this one. And all the hard work, only a single. Doesn't matter. 186 for 3. मिलिंद 10 ओवर में हमने 93 रन देखे थे, और अब देखिए अब दुगने हो चुके हैं। जो हम उम्मीद कर रहे थे, टीम के कप्तान खुद कृणाल पंड्या मैदान पर है, वो भी अपेक्षा कर रहे थे कि भाई दुगने रन्स होने चाहिए, तो हो चुके हैं। अब यहां पर और भी रन्स आएंगे, बहते हुए नजर आएंगे मिलिंद। That's a better one again. Second time in the over. But no, a wide nevertheless. That's an area which Sanveer has to control, contain. These runs, these single runs through the extras might cost CAG dear when the match ends. इससे पहले पाटीदार ने बहुत बढ़िया पारी खेली थी, और अब कृणाल पंड्या भी खेल रहे हैं 44 रनों पर। गेंदबाज वो होता है ना मिलिंद, जो स्टॉक बॉलर नहीं बल्कि स्ट्राइक बॉलर हो, विकेट्स दिलाए अपने टीम को। That's better. That's better.
Huge one coming at the right time of the day for DY Patil Reds. सनवीर की गेंद और इसे खेला है स्टैंड एंड डिलीवर। बिल्कुल बहुत बढ़िया शॉट। ये लाजवाब खेल रहे हैं दोनों बैटर अब, और खास करके अब जो समद ने खेला है ना, गेंद चली गई दर्शक दीर्घा में, मिले हैं 6 रन और अब 200 रनों का आंकड़ा छूने के लिए चाहिए सिर्फ 7 रन डीपीआर को। If you look at each of the DY Patil Red batsmen, each has contributed except Aman Khan, but he's done his job to get them to this stage. At the end of the day, it's a team game. But Patidar, Nitish Rana, the captain Krunal Pandya, and now Abdul Samad on strike. 19 of 12. Second time. 2 sixes tells the story of the way DY Patil are batting. बहुत बढ़िया खेला है, बिल्कुल रोकने से नहीं रुक रहे। बहुत अच्छा शॉट ऑन पुल हमें देखने मिला। स्ट्रांग जोन है अब्दुल समद का मिड विकेट रीजन में। अगर आप गेंद उन्हें इतनी हल्की दोगे और लेग स्टंप पर दोगे तो बस हश्र वही होगा जो अब्दुल समद ने किया था। सनवीर फिर से एक बार इस ओवर में काफी महंगे साबित होते हुए, लगातार 2 गेंदों पर 2 सिक्सर्स आए हैं और डीपीआर पहुंचे हैं 199 रनों पर। You know, when you have a bad day, the bad day just continues, and that's the bad day for Sanveer today. He's been amongst the wickets, 10 wickets at an economy of 8.24, but he's conceded 60 runs so far. You know, Monty, when you look at, third one, that's a bigger one. Oh, Abdul Samad is on fire. 200 रन पूरे हो चुके हैं। क्या बढ़िया खेल रहे हैं। देखिए, आगाज पाटीदार ने किया था और अंजाम यहां पर देते हुए समद। वो कहते हैं ना मिलिंद कि तारीख की दीवार पर उसी का नाम गड़ा होता है जिसका आगाज नहीं अंजाम बड़ा होता है। डीपीआर 205 रनों पर पहुंची। बहुत बेहतरीन खेलते हुए अब्दुल समद 31 रनों पर खेल रहे। And this innings is yet not over. We got 2 more overs after this one. 6s. It's a hot day, but it's raining 6s. 4 सिक्सर्स हमें देखने मिले हैं इस ओवर में। अब्दुल समद बहुत बढ़िया खेला और कप्तान कृणाल पंड्या खुश है उनके बल्लेबाजी से। विस्फोटक बल्लेबाजी, एक्सप्लोसिव इनिंग हमें देखने मिली अब्दुल समद की। 15 गेंदों में, सिर्फ 15 गेंदों में 37 रन। So 211 for 3, a third partnership of in excess of 50, 61 out here of just 23. Can you beat that? Samad seems to have taken over the charge. 37 of 15. How well he's complimented his captain. और खास करके अब्दुल समद को इसी के लिए लाया गया था कि वो बस गेंदों को है ना जिस सीमा रेखा के बाहर भेजे। अब क्या करेंगे कप्तान? 12 deliveries. You know, we were talking of 200. Looks like 230 now. हाँ, 211 तो हो चुके हैं और अब आप देख रहे हो कि ओवर्स जो समाप्त हो चुके हैं 18। तो 12 गेंदों में भी अगर इसी तरह से खेलेंगे अब्दुल समद और कृणाल पंड्या तो 230 240 का आंकड़ा हमें आज इस सेमीफाइनल के मैच में देखने मिलेगा। CAG will go back to the dugout, scratch their heads, make a post-mortem. But at the end of the day, I think they'll have to regroup. So we got Rajneesh Gurbani who's come back 1 for 30 of 3. His last over 37 of 15 is Abdul Samad. That's the wicket. That's what they wanted at this time of the day. With 12 deliveries, the brakes might be put on here.
मिलिंद, ऐसे वक्त पर विकेट जाती भी है तो बस उसकी कोई परवाह नहीं है, क्योंकि देखा था आपने रन्स बनाने के लिए ही ये स्ट्रोक खेला गया था और एक शानदार पारी खेली है कप्तान ने अपने टीम के लिए। कृणाल पंड्या 24 गेंदों पर 44 रन बनाए हैं। सचिन बेबी ने ये कैच लिया था और रजनीश को पहली गेंद पर सफलता मिली है, लेकिन तारीफ करनी होगी कप्तान की, कृणाल पंड्या की। थोड़े से बाहर निकल कर आए थे, ट्रिगर मोमेंट बना लिया था और सिर्फ गैप नहीं ढूंढ पाए। सचिन बेबी ने कैच अच्छा लिया है। एक्शन रिप्ले में सब कुछ बढ़िया देखने मिला। कृणाल पंड्या खुशी खुशी से निश्चित तौर से अपने डगआउट में जा रहे हैं। Surely must be a happy captain, although D.Y. Patil can't afford to be complacent. Strange things have happened in the game. This is a big outfield. So for the D.Y. Patil side, it is Suryansh Shedge, the new batsman, coming in towards the closing stages. How much can he do? That's the question. Nothing to worry for him. Yes, that's why I said, nothing to worry for him. Play any stroke that you want. Get the runs. Get the ones and the twos. The fours and the sixes will surely come. रजनीश अगर इस ओवर में रन्स नहीं देते हैं और अच्छी गेंदबाजी करते हैं तो ये आने वाली जो ओवर्स है ना, ये 2 ओवर्स भी मायने रखेंगे, क्योंकि हम सिर्फ ये पहला पर्व देख रहे हैं। डीपीआर ने जो 211 रन्स बनाए हैं, हमें सीएजी की बैटिंग भी देखनी है। Second time, 2 dot balls was it? He's cautioned him there. The bowler, Rajneesh Gurbani, 2 for 30. He's done his part of the job. Got that first wicket, the important wicket of Aman Khan. And now, at the fag end of the innings, he's got the captain there. The partnership was flourishing. And Monty, we always say that a fall of a wicket, the new batsmen always have that time to get the eye in. Not very easy. But in a T20, you got to do it as quickly as possible. डगआउट से निकलते वक्त ही आपको बिल्कुल तैयार होकर ही आना है मैदान पर कि भाई अब T20 के 2 ओवर्स ही बचे हैं तो मुझे खुलकर खेलना है, मुझे मारना है, चौके लगाने हैं। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं और वजह है जो कि है गेंदबाज रजनीश। बिल्कुल बेहतरीन गेंदबाजी की है। स्लॉग ओवर्स में अगर एक गेंदबाज बल्लेबाजों को रोकता है, रनों को रोकता है, तो उसकी तारीफ करनी चाहिए और रजनीश बिल्कुल तारीफ के हकदार है। मिलिंद, Yes, 2 dot balls, a wicket in 3 and a single. How different from conceding 10 or 12 runs when you concede only 1, which means you got yourself up by 8 or 9 more runs, which you might have conceded. That's a wonderful stroke there. And good running. Monty, all the batsmen that we've seen in action, we've seen some wonderful calling between the non-striker and the striker. Great understanding. The communication skills have all been on view. बहुत इंपॉर्टेंट बात होता है कि क्योंकि हम कहते हैं कि जो टीम होती है, a team is not a group of people who work together. A team is a group of people trust each other. Well, who better to tell me and viewers than a policeman sitting next to me? रजनीश, ये देखिए एक कुछ अलग शॉट खेला है। अब रन्स आए कैसे भी आए, जो भी आएंगे स्वागत करेंगे डीपीआर। 215 4 विकेटों के नुकसान पर ये 19वां ओवर मिलिंद समाप्त हो चुका है। So 6 deliveries to go. I said 230. Still possible. अगर मैं कहूं कि ये ओवर फिर से अगर रजनीश को आप देते हैं तो ये पॉसिबल नहीं है। सूर्यांश और अब्दुल समद 40 पर खेल रहे हैं और सूर्यांश ने अपना खाता खोला है।
कौन होगा ये आखिरी ओवर लेकर आएंगे। देखिए ये अब्दुल समद नॉट आउट है, 40 रन बनाए हैं, 17 गेंदों का सामना किया है और खास करके कृणाल पंड्या के साथ जो 61 रनों की साझेदारी की है, मानना पड़ेगा बॉस। Sayan Ghosh, I suspect, is back. CAG has a wonderful support staff. Pulak Dash, their coach. Saswat Rai, their bowling coach. So there he goes. That's it. You know, we're talking of 6 deliveries, 15 runs. But that's the way. The story is very different. What we thought, the script that I and you wrote, is very different from what we are seeing there. निश्चित तौर से ये पिछले 2 ओवर्स जो है ना, वो कृणाल पंड्या की टीम को, डीवाई पाटिल को अच्छे नहीं रहे। पिछले ओवर में भी हमने कृणाल पंड्या को गंवाया था और इस ओवर में देखिए 40 रन बनाकर आउट हुए हैं अब्दुल समद। घोष को मिली है सफलता। सीधा खेलना चाहते थे, फिर इरादा बदला और क्रॉस बैटेड खेलने गए। और जो सीधी गेंद होती है ना, वो हमेशा कहती है यू मिस, आई विल डेफिनेटली हिट। बोल्ड हो गए, ब्रिलियंट बॉलिंग। Very good thinking by Sayan Ghosh and got that important wicket of Abdul Samad. Naushad for D.Y. Patil. Naushad Sheikh, who didn't play the last game. So this is a big occasion for him. He's just got, 5 deliveries to go. Got a wicket of the first ball. Yes, he goes. You did mention the last 2 or 3 overs have been very productive for CAG. ऐसा क्यों हो रहा है डीपीआर के साथ, जहां पर पाटीदार, कृणाल पंड्या बढ़िया खेल रहे थे, फिर अचानक ये 2 ओवर्स में क्या हुआ? तो कहना होगा कि आग लगाने वाली गेंदबाजी शुरू की है। नौशाद सस्ते में आउट हो गए, बिना खाता खोले, मायूस होकर पैवेलियन में लौट रहे। तारीफ करनी होगी गेंदबाज की, बहुत बेहतरीन गेंदबाजी। लगातार 2 गेंदों पर 2 खिलाड़ियों को आउट किया है। तो मिलिंद, क्या सेमीफाइनल में हमें हैट्रिक देखने मिलेगी? Well, that's a rarity in any form of game. Hat-tricks have been the order of the day in all 3 formats, the test matches, the ODIs and the T20s. Remember Chetan Sharma, wasn't it? निश्चित तौर से 31 अक्टूबर 1987 में विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन नागपुर वर्ल्ड कप का वो मैच था। चेतन शर्मा साहब ने 3 खिलाड़ियों को बोल्ड आउट किया था न्यूजीलैंड के, जिया रुदरफोर्ड, फिर इयान स्मिथ और चैटफील्ड। वो पहली हैट्रिक थी विश्व कप वर्ल्ड कप की। अगर T20 की बात करें तो ब्रेटली साहब है जिन्होंने पहली हैट्रिक ली है T20 की। क्या इस टूर्नामेंट में हैट्रिक होती है? Any format, remember, any format, a hat-trick is what a bowler dreams of. But Sayan Ghosh, even if he doesn't get 1, 2 wickets, he's virtually taken about 8 or 9 runs. The field up there, good move. He's got him, has he? He's got him. Oh, what a moment this is, Monty, for the side. What a moment this is. Not only Sayan Ghosh, but the entire team, I'm sure, will celebrate. They'll look back at 215 for 7 or whatever they get. But this is the moment that the CAG side surely was dreaming of when the 2 wickets fell. हैट्रिक बॉल देखिए, यहां पर शॉट खेला था। हैट्रिक पर आउट होना किसी को पसंद है भाई? बिल्कुल किसी को भी नहीं। You know, when the history of D.Y. Patil is written, they will write about this hat-trick. We'll, of course, go back. Yogesh Takavle, loads of experience that he has, the wicket-keeper for them. He's the boy who has, of course, played so much of cricket in Mumbai.
He's been a player who's been in the IPL, but even he couldn't stop the bowler, Sayan Ghosh, from getting a hat-trick. 3 Ws. Remember, there were 3 Ws in cricket. But here, the 3 Ws in the hat-trick is his dream, which he'll remember. अपने सपने को सच में साकार करते हुए गेंदबाज सयन घोष, सबसे बड़ी सफलता इस टूर्नामेंट में, सेमीफाइनल में हैट्रिक। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है आपके क्रिकेट जीवन में? So that figure of 230 now looks difficult because we got 2 deliveries to go, 216 for 7. Bhuvaneshwar Kumar, the experienced Bhuvaneshwar Kumar, India cap. He's there in the center. Bhuvaneshwar, of course, as I said, or called Bhuvi, yes, by his fans. Yeoman service for India for so many years. And we'll see him in action along with Varun Chakravarti. Should get a few, in fact get a 4. Much earned for, isn't it? बहुत देर के बाद गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर गई है, तो 4 रन मिले हैं। एक अच्छा क्रॉस बैटेड शॉट, बढ़िया लॉफ्ट किया, प्रयास तो था लेकिन नहीं रोक पाए। हैट्रिक इस ओवर में और फिर एक चौका। Last ball, 220 for 7. They'll have to settle only for a single, finishing on 221 for 7. For CAG, will now need 222 for victory and for a passage into the grand finals. But what a innings this has turned out to be. What a drama, Monty, that we've seen. The wicket of Aman Khan to start off with. Then 3 partnerships of 50. Patidar, Nitish Rana. Patidar, the captain, Krunal Pandya. And then Krunal Pandya and Abdul Samad. It's taken them to 221. They couldn't have asked for anything better. बिल्कुल, क्रिकेट की जो सारी रोचकता है वो इस मैच में हमें देखने मिली। बल्लेबाजी में बहुत ही बढ़िया पाटीदार ने जो रन्स बनाए हैं, नीतीश राणा ने बनाए हैं, और खास करके कृणाल पंड्या कप्तान, और उसके बाद सारी जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली थी समद ने, तो रन्स बनते हुए नजर आए थे। लेकिन ये जो पिछले ओवर्स है ना मिलिंद, वहां पर थोड़े से बल्लेबाजों को खामोश रखा गया, और कहूंगा कि 2 ओवर्स में 4 विकेट्स गए हैं। देखिए, अमन खान ने शुरुआत की थी और बहुत जल्दी आउट हुए थे, 8 रन बना पाए। लेकिन तारीफ करनी होगी सिद्धार्थ पाटीदार की, जो 40 रनों में 78 रन बनाए हैं। बिल्कुल मैदान के चारों ओर उन्होंने स्ट्रोक्स खेले। मुश्ताक को मिली सफलता, और उसके बाद फिर नीतीश राणा ने बनाए 34, कृणाल पंड्या ने अपने हाथ खोले, हल्ला बोला, रन्स बनाए 24 गेंदों में 44, और अब्दुल समद ने फिर बिल्कुल पाटीदार, नीतीश राणा और कृणाल पंड्या की तरह ही खेलते हुए अपने टीम के लिए 40 रन बनाए। और उसके बाद मिलिंद, आप बताइए। So yes, 4 batsmen getting the runs for D.Y. Patil Red. They used 1, 2, 3, 4, 5, 6 bowlers. With the pick of the bowlers, 3 for 30 was Sayan Ghosh, 2 for 34 was Rajneesh Gurbani, and 2 for 30 was Abid Mushtaq. We will now, of course, with 221 is what D.Y. Patil got here. The red side batting first, having been put in by CAG captain Ankit Sharma here in the first of the semi-finals of the 18th edition of the D.Y. Patil cricket tournament. We've got Siddharth Patidar from D.Y. Patil Red slamming 78 from 40 deliveries in an innings that looked like a manual on cricket shots because there was no part of the ground that was left unexplored. क्या अप्रोच था बल्लेबाजी में? जैसा नॉर्मली एक बैट्समैन की थिंक रहती है, ओपनर बैट्समैन की, कि
कि नॉर्मली स्टार्ट देना है, बॉल को वॉच करके सेट होना है सबसे पहले, तो वही एक सोच के से गया था मैं. टेम्पो को कभी भी ड्रॉप नहीं होने दिया. इट्स माई नेचुरल कि अगर सेट हो जाता तो फिर रन्स आते रहते. आई हैव शॉट, सो दैट्स वाई. कंडीशंस काफ़ी डिफिकल्ट थे. डिस्पाइट दैट सिंगल्स को डबल्स में लगातार कन्वर्ट करने की वहाँ पे कोशिश दिखी. कृणाल भैया ने थोड़ा बकअप करते रहे, थोड़ा उन्होंने समझाते रहे कि अभी पार्टनरशिप बिल्ड करनी है, सो दैट्स वाई उनका भी हेल्प रहा थोड़ा एक्सपीरियंस का. तो वैसे जहन में कोई टारगेट था? या मतलब वैसे कोई टारगेट तो नहीं था, लेकिन ये है कि बस ओवर टू ओवर टारगेट ले रहे थे हम कि इस ओवर में इतने, इस ओवर में इतने, सो दैट्स वाई. और उसको मीट भी कर रहे थे. यस यस. विकेट कैसा बिहेव कर रहा था? विकेट ऐसे नॉर्मली बैटिंग को ही ज़्यादा हेल्प दे रहा था, वेरिएशंस यूजफुल रह रहे थे, थोड़ा स्लो विकेट लग रहा था. तो इवेंचुअली टारगेट से संतुष्ट है. क्या रणनीति रहेगी दूसरे इनिंग्स में? या इट्स अ गुड टारगेट. 2-2 इज़ अ वेरी गुड टारगेट. एक बॉलर्स को बहुत बड़ी हेल्प मिल जाती है, सो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड टारगेट टू चेस, मतलब डिफेंड. जी बिल्कुल. गेंदबाजों ने तो अपना काम कर दिया है. 222 का टारगेट सेट किया है. अब ओनस है गेंदबाजों पे इसे डिफेंड करने का. मिलते हैं दूसरी इनिंग्स में. इस वक्त देखिए बहुत ही खूबसूरती के साथ इसे That's a brilliant stroke. It's a wonderful run up he has. Oh, that's the one that they wanted. That's the one that they wanted. Aman Khan was the first batsman to go, with Rajesh Gurmani getting that first wicket. And after that, Patidar in the company of Nitish Rana. A few chances were tried, went a begging. The fours and the sixes were coming at regular intervals. The fours were stopped. Very effective fielding by the CAG side, where the captain winning the toss, Ankit Sharma, and deciding to put D.Y. Patil in. And perhaps that was the reason as to why they got the wicket, the second wicket of Nitish Rana. The informed batsman, Patidar, was joined by the captain, Krunal Pandya. And it was the two batsmen who kept on attacking and attacking well to all sides of the ground to make sure that they found the gaps to perfection. They played virtually every stroke out of the book. The straight drives, the hulls, the pulls, some innovative strokes that they played. And ultimately, it was some good catching. Varun Lavande taking that catch right in the deep on the fence. Aman Khan, Siddharth Patidar, Nitish Rana, Abdul Samad and Krunal Pandya all added to the total for the D.Y. Patil red side. The fours and the sixes came at regular intervals. The score for the D.Y. Patil side kept on being pushed. The CAG bowlers were found wanting. Someone like Sanveer Singh, who had a haul of 10 wickets in the earlier 4 innings, was belted all over the place. The full toss were taking advantage of, but some of them went straight to hand. The captain had a wry smile after he got that score in excess of 40. And it was then Abdul Samad who followed immediately after that. But the D.Y. Patil side, after batting so well to get 211 at one stage, they lost the 3 wickets in quick succession. A hat-trick that came the way
of the CAG side. So yes, DY Patil finished their first innings on 221, and the target now for the CAG when they come out to bat will be 222 in 20 overs. So yes, we have a great contest in the offing here in the semi-final at the DY Patil Stadium. 222 is certainly a tall order for CAG. They will need a good start, particularly the batting of Varun Lavande, who's got 188 runs at a strike rate of 142.42. He'll have to do all the work along with his teammates Sanjay, Sachin Baby, Senapati, Sanveer Singh, Chatterjee, and the captain Ankit Sharma. The DY Patil team will have a lot of thinking to do. And the two batsmen for CAG will now troop out Varun Lavande, and along with him will be R. Sanjay. These were the two batsmen who opened for them in the quarterfinals when CAG beat DY Patil Blue 185 for 4 that they got. Lavande 73, Sanveer Singh 45. So it will be R. Sanjay, 4 innings, 93, strike rate of 152.46. And this is the man in form. Varun Lavande, 4 innings, 188, a strike rate of 142.42. Remember, 222 is the target for CAG if they want to make it to the finals of the 18th edition of the DY Patil T20 Cricket Cup. For DY Patil, Reds, they need to take 10 wickets to get to the finals. Who better to start off the bowling attack than the India international Bhuvaneshwar Kumar? Bhuvaneshwar Kumar, loads and loads of experience. Over number 1 year of the CAG innings. Oh, what a delivery this is. It's got a slip in position. And then on the offside, he's got a packed field. Off your picture frame, a square point, a cover, an extra cover, and a deep mid-off. And then we've got a third man. That's the field on the offside. But that first delivery would gladden the hearts of the DY Patil side. Monty Kopka joins me back again. Monty, for DY Patil, who better to start the bowling spell than the India international Bhuvaneshwar Kumar? निश्चित तौर से आपके पास ये बहुत बड़ी मिसाइल है, अनुभवी गेंदबाज है, भारत के लिए बहुत बड़ा कारनामा किया है गेंदबाज भुवनेश्वर ने। और देखिए बहुत ही खूबसूरती के साथ इसे खेल दिया कवर के क्षेत्र में, सिर्फ पंच किया। अच्छी शुरुआत। So Bhuvaneshwar Kumar, 2012 to 2022 for India. That's a wild stroke. Don't do that.
I'm sure his teammates must be saying from the dugout, our Sanjay, 93 runs, a strike rate of 152.46 in 4 innings, out here in the 18th edition. And this bowler, Sunrise Hyderabad in the IPL, Uttar Pradesh in the domestic cricket season. Oh, second time. In fact, the third time in this over. He's beaten the batsman there. There's this famous Hindi song, Dhundo Dhundo Re Sajana. बिल्कुल मेरे मन में भी यही चल रहा था। आपके पास काबिलियत हो, आपके पास हुनर हो, आपके पास प्रतिभा हो ना, तो आप किसी भी पिच पर गेंदबाजी बहुत बढ़िया कर सकते हैं। गुड लेंथ पर गेंद और फिर काटा बदलकर बाहर निकलती हुई गेंद, यही तो खासियत है भुवी की। He's a bowler who swings the ball both ways. His in-swingers in particular are the ones which are lethal. He upgraded, I remember, his bowling armory with the reverse swing. And of course, the slower balls and the Yorkers, particularly in the death overs, have been his speciality over the years. और एक जो उनकी जो बॉलिंग की एक्शन है, स्मूथ एक्शन जो हमें देखने मिलती है भुवनेश्वर की, बहुत बढ़िया। एक 222 रनों का लक्ष्य है, मजा आएगा इस मैच में। Made his debut for India versus Pakistan on the 25th of December 2012 and played his last T20 22nd of November 2022 versus New Zealand. Yes, I love his action. Smooth, rhythmic. End of over number 1, in which he's conceded 5 runs. So chasing 222, CAG are 5 without a wicket. एक अच्छी शुरुआत, बेहतरीन गेंदबाजी भुवनेश्वर कुमार द्वारा। और कहा भी जाता है ना मिलिंद कि शुरुआत करने के लिए आपको महान होने की जरूरत नहीं होती, लेकिन महान बनने के लिए आपको एक अच्छी शुरुआत करने की जरूरत होती है। और वो अच्छी शुरुआत भुवनेश्वर ने अपने टीम को दी है। डीवाई पाटिल रेड बनाम सीएजी के बीच ये सेमीफाइनल का पहला मैच चल रहा है। डीवाई पाटिल रेड ने बनाए हैं 221 और अब उस लक्ष्य को पार करना होगा सीएजी को। अंकित शर्मा की टीम को बनाने होंगे 222। So R. Sanjay on strike. You know, when I mentioned to this boy, were Prince Badiani, 4 wickets in 4 matches. When I was there at the toss and doing the pitch report, and when I said the fast bowlers will really have to work, he turned round to me, had a smile, and he said, I'll work hard. Now this is the acid test for him. निश्चित तौर से वो 80 के दशक में वेस्ट इंडीज का जो हम तोफखाना देखते थे, बिल्कुल वो तोपे थी, मिसाइल्स थी। जोएल गार्नर, एंडी रॉबर्ट्स, मैल्कम मार्शल एंड माइकल होल्डिंग। भारत के लिए भी देखा है हमने कपिल देव, करसन घावरी, प्रिंस। बिल्कुल एक नीति बनाकर आए हैं इस वक्त संजय और वरुण लवंदे ने पिछले मैच में बहुत बढ़िया बेहतरीन खेल खेला था, अपने टीम को जीत दिलाई थी। जहां पर शिखर धवन ने 99 रनों की पारी खेली थी, वहीं पर सीएजी के ओपनर वरुण लवंदे ने 73 रन बनाए थे, 9 चौके लगाए थे और 2 सिक्सर भी लगाए थे, टीम को जीत दिलाई थी। He's a tall lad. Straight away starts off with what his team doesn't want him to do. That's not what they say the doctor ordered. And obviously his team doesn't want him. You know, after the first over that Bhuvaneshwar Kumar has bowled, Prince Badiani, who's played for Mumbai in the under-19 cricket tournament, his height is what he should take advantage of. बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एक हाइटेड गेंदबाजी करता है तो जहां पर उनकी जो हाइट होती है, अगर वो 6 फीट के है तो उनका हाथ बढ़ जाता है, तो 8 फीट से गेंद आती है, ऐसे वक्त खेलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है।
लेकिन यहां पर किसी भी बात की कुछ भी मुश्किलात नहीं, बहुत ही सुंदर खेल दिया, गेंद को भेज दिया लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा के बाहर। प्रिंस के पास स्पीड है, देखिए गेंद पर आए और बहुत ही बढ़िया शॉट खेला, मिडलिंग बहुत अच्छी थी। आफ्टर वन बाउंस गेंद चली गई सीमा रेखा के बाहर। The prince will have to become an emperor or a king if he wants his side to do well. जी हां, अगर आपको बेहतरीन से बेहतरीन बनना है तो आपको वो करना है जो आपने कभी नहीं किया, आज करना होगा प्रिंस को। The second time, that's an area which he'll have to control. प्रिंस है जो कि स्पीड पर जा रहे हैं, लेकिन कंट्रोल इज बेटर देन स्पीड। Surely the wicketkeeper Yogesh Takaule has a lot of work to do. 11 without a wicket, 4 and the 2 wides have added to the problems. He's got a nice run up there, but as you rightly mentioned, what good is a run up? What good is the height if you're not able to control the delivery? Good cricket is all about control. Your batting, your bowling is all about control. बिल्कुल, हमने जो हाइटेड गेंदबाज देखे थे थोड़ी देर पहले, मैंने जोएल गार्नर का जिक्र किया था। देखिए आपके पास हाइट है, लेकिन आप जो गेंद पिच कर रहे हो ना, आपको स्विंग मिल रहा है, तो ऐसे वक्त तो जो सीम है ना उसे चेंज करना होगा। ये बात ध्यान में रखनी होगी। जब एक गेंदबाज अपने गेंदबाजी पर निकल पड़ता है तो जो ग्रिप करता है, फिर उसकी जो रनिंग एक्शन होती है, रिलीज करता है, फॉलो थ्रू, ये चारों बातें है ना काम कर जाती है। That's better. That's better. Oh, he says, give it to me, tells the umpire. Can you imagine, Monty, how fortunes can change in a few seconds? निश्चित तौर से इसी तरह से गेंदबाजी करनी होगी प्रिंस। उनके पास वो काबिलियत है कि वो बल्लेबाजों को बांध कर रख सकते हैं। गुड लेंथ पर पिच होने के बाद थोड़ा सा उछाल लिया था और इसे कट करने गए थे, अंपायर से डिमांड करते हुए कि भाई बल्ले को लग कर गई है, ना कहा। 3 wides, 1 4, and then he makes a comeback. That's what good bowlers, champions are all about. This young boy surely will learn and is learning. भारत के लिए ईशांत किशन थे हाइटेड गेंदबाज, बहुत बेहतरीन गेंदबाजी की है ईशांत किशन ने। ईशांत किशन नहीं, ईशांत शर्मा ने। Fourth time in the over. I wonder whether the captain should walk up to him and say, nothing is going wrong. Remember, you'll get it right, my dear friend. One word is good enough to encourage you. बिल्कुल सही कहा मिलिंद। ये ऐसे वक्त पे जहां पर गेंदबाज बिल्कुल जो लाइन पर गलत हो रहे, दिशा से भटक रहे, तो कप्तान को जाना होगा, उन्हें बताना होगा कि भाई 222 रन का लक्ष्य है। आप अगर सही विकेट को पकड़कर गेंदबाजी करोगे तो हम इस मैच को जीत लेंगे। स्पीड बहुत बढ़िया है, गेंद स्विंग भी हो रही है, बस अब थोड़ा सा लाइन पर और अपनी स्पीड पर कंट्रोल करना होगा मिलिंद। I love this picture. There were 5 of them who walked up to him and patted him on the back. In fact, they're all together. I wonder whether he's had a problem with his leg there. But I don't see. क्या होता है मिलिंद, जब एक गेंदबाज इस तरह से लड़खड़ा जाता है या अपने बॉलिंग से भटक जाता है, लेंथ और लाइन पर काम नहीं करता, तो जो बैटर होते हैं ना, उनका जो विश्वास है ना वो बढ़ जाता है। उन्हें कुछ करने की जरूरत नहीं होती और वो समझ जाते हैं कि अब गेंद क्या आने वाली है और किस तरह से आने वाली है। I also think there's a slight little dip in the ground, perhaps, which is worrying the bowler. But remember, there were 3 or 4 bowlers from the other side, CAG, who also bowled. But there is a problem, for sure. There, I can see a big stick with a broom where they seem to be setting the place right.
a little valley which has been built up as a result of the spikes which are used, and that's the problem. So that's the problem which the bowler Prince Badiani has faced. तो क्या ये सब कुछ करने के बाद अब प्रिंस फिर से एक बार अपने वो लेंथ और लाइन पर आएंगे अथवा नहीं, ये देखना होगा मिलिंद. You know, sometimes you have a psychological problem in your head. देखिए रनिंग एक्शन कितनी बढ़िया है, और जब वो लैंड करते हैं, रिलीज करते हैं ना गेंद पर, तब उनका जो पैर देखिए, स्ट्रेचिंग भी देखिए, और बहुत बड़े एक्शन, बिल्कुल एक थोड़ा सा साइड ऑन होकर गेंदबाजी कर रहे हैं. He's got a wonderful action. In fact, needs to translate that into action. Well, that's better. That's better. Got the batsman to commit himself into the stroke. And as a result, just imagine that faint little nick. That faint little nick could have said thank you so much to the bowler. बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि ये गेंद अब वाइड घोषित करेंगे अंपायर. तो यहाँ पर बल्लेबाज गेंदबाज के साथ साथ अंपायर्स का भी इम्तिहान है मिलिंद. This is surely a long, long over with as many as 4 wides. I wonder whether Monty, if I was the captain, and I'm not a captain there, but if I was the captain, I would replace Prince and get him from this side. You know, sometimes it's in your head. I can't bowl from here. I'm getting it wrong. You've spoken to me. 3 of you have spoken to me, but I still can't get it right. Get me from the other side might change the momentum of the bowler. बिल्कुल सही कहा मिलिंद आपने, लेकिन ये पहला ओवर तो समाप्त होना चाहिए. Very true. Oh, that's better again, but still a wide. Oh, he seems to have got the control there, but he doesn't seem to get hold of the height of the delivery. The wicketkeeper at the end of this match might turn around and tell him, यार बहुत मेहनत करवाया तूने मुझसे. अभी भी कुछ बराबर नहीं चल रहा है प्रिंस के लिए. क्या सोचते होंगे मिलिंद अपने बॉलिंग मार्क पे जाते हुए? Well, just take it off. Just take it off. That's what you need to tell yourself. पूरे ओवर की नहीं बल्कि आने वाली गेंद की ही उन्होंने सोच रखनी चाहिए. Now, can you imagine after all that ball had gone straight to a fielder? What an irony, what an anticlimax it would have been. So finally the over ends after a good 6 or 7 minutes wait. After 2 overs, 18 without a wicket. That's the last one which the fielder wanted to play to the mid-wicket region. Got the top edge. Didn't time it well, didn't middle it well. And nearly went to the fielder. Nearly went to the fielder. 18 without a wicket after 2. Chasing 222. A run rate of 11.33. So that's within the control of CAG. Good match coming up, Monty. निश्चित तौर से पहला ओवर जो भुवी ने किया था सिर्फ 5 रन दिए थे, लेकिन दूसरे ओवर में बल्लेबाज संजय और वरुण को कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि जो गेंदबाजी की जा रही थी प्रिंस द्वारा, प्रिंस ने जो रन्स दिए हैं, और कभी कभी हम हमारे कमेंट्री में कहते कहते कह भी देते हैं कि भाई बोनस दिया है. Well, I'm a bit surprised there. Krunal Pandya has come on himself in place of Bhuvaneshwar Kumar. Perhaps they might want to keep Bhuvaneshwar Kumar for the end, which is where he's always effective. जी हाँ, आपने कहा कि मैं कप्तान होता तो ये करता. मैं कप्तान नहीं हूं, लेकिन वहां पर कृणाल पंड्या कप्तान है और वो आईपीएल में कप्तानी कर चुके हैं. Oh, there you are. What a move this is. The captain comes on, gets a wicket, changes the fortunes of this game out here. Can you imagine a second over which was unproductive for D.Y. Patil? The captain says,
I've got to lead from the front. He comes and gets a wicket of the first ball. प्रिंस की तकदीर साथ नहीं दे रही थी और ऐसे वक्त तस्वीर बदलने की जरूरत थी और यही वजह है कि कृणाल पंड्या आए और सिर्फ आए नहीं बल्कि पहले ही गेंद पर उन्होंने वरुण लवंदे जैसे बेनजीर विकेट को प्राप्त किया है. So 188 runs for Lavande in 4 innings. Like Aman Khan, it's been this boy who's also failed. So yes, things happening out here. Shot came in and beat the batsman Lavande comprehensively. He tried to make room. Monty, I thought that Lavande, the first ball, when you're trying to play a square cut or a square drive, without even settling down to Krunal Pandya, the experienced Krunal Pandya, you made and paid the penalty. पहले ही गेंद पर सफलता अर्जित की है कप्तान ने कृणाल पंड्या ने. अब नए बैटर आए हैं सेनापति. एक बहुत बड़ा लक्ष्य है 222 रनों का खेलना होगा. Second time, yes he goes. What a wicket this is turning out to be. Yes, we saw a hat-trick earlier on, but this is too early. This is too early for my liking. बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी इस वक्त कृणाल पंड्या की. बल्लेबाज ठीक तरह से समझ ही नहीं पाए इस गेंद को. So the second time that the captain Pandya got the ball to come in with the arm. देखिए मिलिंद यहां पर कॉर्नर ऑफ द क्रीज और फिर एंगल बनाकर ये रैपिड वन था. बिल्कुल बल्ले और पैड के बीचों बीच जाकर जो गैप होता है ना वो लेकर गई प्लम एलबी. बेहतरीन गेंदबाजी कप्तान कृणाल पंड्या की. You know, you mentioned ifs and buts don't count in the game of cricket or any sport or in life. But when you look back now, for CAG, the captain won the toss. They put in D.Y. Patil. D.Y. Patil gets 222 and now they lose 2 wickets. सबसे अच्छी बात क्या है कृणाल की, वो अपने गेंदबाजी पर बिलीव करते हैं. एंड यू बिलीव इन यूर सेल्फ. यू कैन डू एवरीथिंग. हैट्रिक बॉल है. एक ही मैच में क्या 2 हैट्रिक देखने मिलेगी मिलिंद? So yes, that will be a miracle. Decides to change sides is the captain after those 2 wickets of the first 2 balls. 18 for 2 just in the 3rd over. Surely a good move to replace Bhuvneshwar Kumar. इतिहास के पन्नों पर अपना नाम दर्ज करने के लिए चल पड़े थे कृणाल पंड्या, लेकिन गेंद को संभल कर खेला. So 2 deliveries in which he's got 2 wickets, a dot ball. Monty, no side or every side wants this situation in a game, particularly the early part of the game. मिलिंद व्यूह रचना देखिए. 2 फील्डर है जो स्लीप पोजीशन में है. Pressure, big pressure there being put by Krunal Pandya, and rightly so, on Sachin Baby. तस्वीर बदलने में देर नहीं लगती. बस आपको आपके पास जो काबिलियत है, हुनर है, उस पर भरोसा रखना चाहिए. एक बेहतरीन गेंदबाजी, लेकिन इस वक्त गेंद को निकाल दिया है लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में. वहां पर बेहतरीन, बहुत बढ़िया फील्डिंग. कृणाल पंड्या के इस ओवर में क्रिकेट तलबगारों की तलब पूरी होती हुई नजर आई. बहुत ही बेहतरीन सफल ओवर रहा है ये कृणाल पंड्या का. पहले 2 गेंदों पर 2 खिलाड़ियों को आउट किया कृणाल पंड्या ने. कैप्टन की तरह काम करता हुआ नजर आ रहा है. So 20 for 2 for the CAG side.
Sachin Baby, they lost Varun Lavande for 8 correction, and then they lost Senapati without scoring 2 consecutive deliveries. R. Sanjay will have to hold the fort with Sachin Baby. क्रिकेट का जो फॉर्मेट है, वनडे है, टेस्ट क्रिकेट है, आपका नाम अगर सचिन है तो फिर आपको बहुत बड़ा खेल खेलना पड़ता है मिलिंद. Well, what a name, Sachin Baby, after one of India's greatest cricketers of all times. Sachin Baby, who plays for the Rajasthan Royals and now for the Royal Challengers Bangalore. We got a bowling change from the far end. That's a good move by the captain because he knows that the bowler that they use from that end, Prince Badiani, was low on confidence. And we now have Abhinandan, who has now come in bowling over number 4. Sachin Baby, I did mention Royal Challengers Bangalore till 2021 and plays for that wonderful state of Kerala in the Ranji Trophy. He's on strike. What a field, what a field. Perhaps we might have a view of the field a little later. A surely packed field for the southpaw. There are 4 of them plus the first slip waiting to gobble the one which could be an outswinger from him to the left-handed, or actually the in-swinger. Well, even you got a packed field on the offside. Monty the bowler. Oh, that could have been close. That could have been virtually close. The last thing that they want is a run out. एक अच्छा ट्रैप यहाँ पर लगा के रखा है गेंदबाज अभिनंदन ने, और जिस तरह से ऑन साइड पर धकेला और विद द स्ट्रोक दौड़ना शुरू किया था, दूसरा रन भी लिया है क्योंकि फील्डर है जो कि डीप में है, तो इस ट्रैप में निश्चित तौर से फंसाना चाहेंगे अभिनंदन. बहुत बढ़िया शॉट खेला है, बिल्कुल सुंदर स्क्वायर ड्राइव देखने मिला. From a boy whose parents named him after Sachin Tendulkar. That's his profile. जी हाँ, मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि अगर आपका नाम सचिन हो तो फिर आपको थोड़ा सा क्यों ना हो काम करना ही पड़ता है, और अगर आपने पूरा काम कर दिया तो भाई सचिन तेंदुलकर जहां कहीं पर भी हो वो डीवाई पाटिल पर आ सकते हैं. बहुत बढ़िया शॉट खेला, गेंद चली गई सीमा रेखा के बाहर, और इसी तरह से खेलना होगा क्योंकि 222 रनों का लक्ष्य है आपके पास. 27 रन बने हैं 2 विकेटों के नुकसान पर CAG के. He's been around for a long time. 2009 when he got into big cricket. Second time. There is a strong offside field. You can manage to get it off that fielder once, but not the second time. बिल्कुल एक अमरेला नजर आ रही है विकेट कीपर के साथ साथ. आप देख सकते हो एक स्लीप है, और अब जो गली के खिलाड़ी है उन्हें डीप में भेजा जा रहा है. स्क्वायर थर्ड मैन पर एक पॉइंट है, एक कवर है, और 30 यार्ड सर्कल में एक मिड ऑफ भी खड़ा है, और जो फाइन में थे थर्ड मैन में थे उन्हें अब लाया गया है फ्लाइंग स्लीप में. That's huge. That's huge from a boy who was associated in a partnership of 338 with Sanju Samson in a match against Goa in the Vijay Hazare Trophy. So that 6 with all the experience came at a good time. बहुत ही बढ़िया लाजवाब यहां पर यह शॉट खेला, गजब का टाइमिंग, कमाल का शॉट. गेंद को डिपॉजिट किया बाउंड्री लाइन के बाहर, सिक्सर. बिल्कुल एक समीकरण लेकर मैदान पर खेल रहे हैं सचिन बेबी. So these two will have to stitch the innings together. A combination of Sanjay on strike and Sachin Baby. I love his name, Sachin and Baby.
He's 35 years old, no longer a baby. मेरे मन में तो ये चल रहा है मिलिंद कि सचिन बेबी को सचिन बाप बनना पड़ेगा. Absolutely. Oh, today is the day for him. All his experience of 15 odd years. And we've got Bhuvneshwar Kumar back again. You know, this is what is called destiny. The captain, Krunal Pandya, says, let me come back for 1 over. He came in, bowled the first 2 balls, 2 wickets. And then at the end of the over, he says, no, I'm not going to be selfish. मैं खुदगर्ज नहीं बनूंगा. He's got Bhuvneshwar Kumar back. जिस तरह से गेंदबाजी में परिवर्तन किया जा रहा है, बल्लेबाजों को जो गेंदबाजी की जो गेंदें है वो नहीं समझनी आनी चाहिए. ये भी विचार बस उस नीति के पीछे होंगे. That's a lovely stroke there. Punches this, square drives, opening the face of the blade. A stroke which gladdens your heart, even in this format of cricket. 4 runs was asking the moment it left the blade. संजय खामोश थे कुछ देर के लिए, लेकिन काम इतना खामोशी से करना चाहिए कि सफलता आपकी शोर मचाए. बढ़िया शॉट खेला, बेहतरीन स्क्वायर ड्राइव. And if you can get it of the bowling of Bhuvneshwar Kumar, you won half the battle. और आप अगर इंडिया के बॉलर को इस तरह से खेलते हो तो आपका विश्वास दुगना हो जाता है मिलिंद. That confidence here for both Sanjay and Baby after they lost 2 early wickets. The run rate, nothing wrong. 11.81, well within the grasp. But the essence is the wickets have to be there. This partnership can't be broken from their perspective. Or beaten there. That's the delivery which is always the dangerous one from Bhuvneshwar Kumar. Every young boy must look at him and emulate him in his action. स्पीड, एक्यूरेसी, कंट्रोल, ये सब कुछ था इस गेंद में. एक्सप्रेस डिलीवरी हमें देखने मिली. बल्लेबाज नहीं समझ पाए. एक अच्छा बैटल यहां पर नजर आ रहा है. देखिए, बैटल होने के लिए आपके पास मिलिंद एक अच्छा टोटल होना चाहिए, और वो टोटल टीम के पास है. 221 रन बनाए हैं डीपीआर ने. Second time, you know, Monty, did someone say that fast bowlers have to be 6 feet 5 inches? Did someone say that you need broad shoulders, big wrist, like the West Indians or the Australians? Look at Bhuvneshwar Kumar. He's got none of it. But look how well he uses his upper part of the body, the brain. बिल्कुल सटीक गेंदबाजी की जा रही है. अब खुलकर खेलने का मौका नहीं दे रहे हैं भुवी. बेहतरीन ओवर रहा है ये. फिर से एक बार भुवी ने जिस तरह से पहले ओवर में सिर्फ 5 रन दिए थे, उसी तरह से इस ओवर में भी देखिए जो रन्स दिए हैं वो सिर्फ 5. अच्छा स्पेल भुवी का. So we into the 5th over of play with 38 for 2. There are 2 ends, of course. This is our end, which is closer. If you've never been to Mumbai, the township of Vashi or Navi Mumbai. On the far side is Belapur. Now, is this going to be close? Is this going to be close? That's a catch which should have been taken. ऐसा लग नहीं रहा था कि वहां पर वो कैच छूट जाएगा. 40 रन संख्या हो चुकी है. सचिन बेबी खेल रहे हैं 16 रनों पर. देखिए रिप्ले में भुवी को ये सफलता मिलने वाली थी. हल्के हाथों से इसे खेला था. गेंद हवा में थी, फील्डर आए भी थे. ऐसा लग रहा था कि वो जज कर रहे हैं, ले लेंगे, लेकिन फिर वो गेंद है ना पीछे चली गई और उस गेंद तक नहीं पहुंच पाए. गलती हो गई. 2 रन भी मिले हैं. Remember, it's 1:30 in the afternoon when the sun is right on top of your head. The ball comes from the sun into your eyes. 40 for 2 after 5.
The required run rate has now crept up to 12.13. This is the partnership, 22 of 16. They need much more. A partnership of 100 would perhaps get them back into the game. I don't think they're in the game right now. 22 रनों की पार्टनरशिप है मिलिंद, अगर उसमें और 2 जोड़ देंगे तो 222 होगा. I wish it was as simple. Sometimes numbers can be so misleading. We're now looking at a bowling change there for the D.Y. Patil side. Varun Chakravarti, 6 wickets, 4 innings, an economy of 7.19. पांचवा विकल्प वरुण चक्रवर्ती. और अब देखिए जो पिछला कैच छूटा था यह नहीं छूटेगा. पहले ही गेंद पर सफलता मिली वरुण चक्रवर्ती को. "32 years old, he's not a young boy, but he's got loads of experience." A wicket of the first ball. And just Monty, when we were talking of a partnership of 22 with 2 more to be added to become 222, D.Y. Patil has other ideas. So wicket of the first ball, the wicket of R. Sanjay, the second of the openers after Lavande goes for 14 of 14, caught by the captain Krunal Pandya. And CAG are now struggling at 40 for 3. The current run rate 7.74. The asking rate has cropped up to nearly 13. डीपीआर ने पहले बेहतरीन बल्लेबाजी की और अब शानदार गेंदबाजी की जा रही है. सेमीफाइनल से फाइनल में प्रवेश करने के लिए डीपीआर बनाम सीएजी के बीच ये मैच चल रहा है. और अब डीपीआर के गेंदबाज बढ़िया बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे हैं. यह है सफल गेंदबाज वरुण चक्रवर्ती. Varun Chakravarti's shirt number here is 41, but his shirt number for India, or cap number for India, was 29, T-shirt number 29. T20 debut against Sri Lanka, where his cap was 87, and his last T20 was November 2021 versus Scotland. He's also played, remember, for the Kings 11 Punjab in 2019 and currently for the Kolkata Knight Riders, where the squad number is 29. So a wicket of the first ball for Varun Chakravarti. We've still got 3 to go, 41 for 3. A combination of Sanveer Singh, the boy who got them runs in the last match, 45, all-round show by him. 2 for 30. But today was a different day. He conceded 72 runs in his 4 overs. He'll have to make amends with the bat out here. On strike, the experienced Sachin Baby. Now this will go straight to hand again. Second wicket for Varun Chakravarti in this over. And CAG are committing harakiri. They've lost the 4th wicket with the score on 41, and certainly CAG 222 is looking to be a huge task in front of them. Short, didn't middle it well, and you can't beat a fielder in any format with these catches which come to you. So Varun Chakravarti getting a wicket of the 2 wickets in the same over. And we now have for the CAG big trouble.
Monty, you just turned your back for 30 seconds. And D.Y. Patil said, Monty, we're taking one more wicket. सोच, किताब, दोस्त और रास्ता अगर सही मिल जाए ना मिलिंद, तो जिंदगी निखर जाती है, वरना ताश के पत्तों की तरह बिखर जाती है। यहाँ पर बिल्कुल ताश के पत्तों की तरह बिखरती हुई नजर आ रही है ये टीम CAG। वजह है ये एक्सपीरियंस बॉलर वरुण। Yes, falling like a pack of cards, as they say. The ship is now in troubled waters. You're playing strokes the moment you come in. The sweep is the riskiest of stroke to play of the very first ball that you faced. And particularly when you're 4 wickets down, what's the hurry? Even for Sachin Baby, who lost that 4th wicket, there should have been no hurry at all. He bowls the quickish ones there, builds up the speed close to 90 kilometers per hour. Successful over in which he got 2 wickets. CAG tottering at 42 for 4. 2 wickets and just 2 singles, 2 dot balls. Monty, that's what D.Y. Patil wanted from Varun Chakravarti. बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया गेंदबाजी की है वरुण ने। अपने पहले ओवर में 2 सफलता अर्जित की है उन्होंने और विपक्षी टीम को बिल्कुल बैकफुट पर भेज दिया है। कृणाल पंड्या फिर से आए हैं कप्तान। अपने पहले ओवर में उन्होंने बेहतरीन गेंदबाजी की थी और ऐसा लग रहा था कि अब वो हैट्रिक भी लेंगे। कृणाल पंड्या कप्तान, बैटिंग भी बहुत अच्छी की और अब गेंदबाजी भी, ऑलराउंड परफॉर्मेंस हमें देखने मिला है कप्तान द्वारा। Ankit Sharma, the captain, will now face his counterpart. Hasn't had much to talk about his batting in the T20 year at the D.Y. Patil 18th edition. Monty, we keep on saying that the captain needs to lead from the front. And today is the day for Ankit Sharma. It's now or never. Remember, the league's stage is all history. The quarterfinals is all history. It's the big semi-final, the big day, which separates the big boys from the small ones. देखिए, आप अगर लीग मैच में मिलिंद परास्त होते हो तो इतना दुख नहीं होता, लेकिन जब आप सेमीफाइनल में हारते हो ना, तो शायद उस रात को चैन की नहीं ले पाते हो। Yes, very true. The huge difference between a semi-final, a final, and then the winner can be massive. It's not the prize money. It's that cup which you vie for, the pride of the cup that you mentioned earlier on in the morning. That's the dream of every child. You win a cup at your school level. You go back and tell your friends, nothing seems to be working right for CAG. And then added to that, the bowlers have been spot on, each of them, except for the poor Prince Badiani. Wasn't his day. We all have a bad day at office. He had one today in that over. But I'm sure when he comes back, he'll be a different Prince Badiani. कृणाल पंड्या बिल्कुल यहाँ पर बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए और खामोश रखा है दोनों बल्लेबाजों को, जहां पर 222 रन्स बनाने हैं, एक बड़ा लक्ष्य पार करना है, लेकिन खुलकर खेलने का मौका नहीं दे रहे। D.Y. Patil would not mind conceding a single because the run rate is just going up and up. 42.4. That's
the score at the end of the over. 222 is what CAG are looking for a passage in the final. This tournament has had some great players playing over these 18 editions. The 18th edition itself has had Shikhar Dhawan, Ishan Kishan, Dinesh Karthik, Hardik Pandya. This tournament has had a lot of charm. Dr. Vijay Patil and Abhi Kurivilla, the two pillars. This boy, Varun Chakravarti, with 2 wickets under his belt, brimming with confidence. You know, and when you lose 4 wickets, particularly 2 wickets in each of the 2 overs, your shoulders are drooping. The best thing is to raise your morale. नहीं, नेवर गिव अप। किसी भी वक्त आपको हार नहीं मानना है। देखिए, कप्तान है मैदान पर मिलिंद, एक कप्तानी पारी खेलेंगे। वक्त थोड़ा सा इस वक्त खराब चल रहा है, लेकिन आप अगर सही खेलते हो तो मजा आएगा। इस वक्त उठा दिया है, गेंद हवा में है, 1 2 3 4 खिलाड़ी आए हैं और कैच नहीं ले पाए। इट्स माइन, ये आवाज वहां पर होनी चाहिए थी मिलिंद। That's right, that's the word, mine. You don't even have to say it's, just the word mine is good enough. And I'm sure all 3 of them, very experienced cricketers, did not say that. They surely could have been taken. You had someone like Shadegay going to it. You had the bowler himself, Varun Chakravarti, and there was one more fielder. Could have been wicket number 5. मिलिंद, आपसे सवाल रहेगा, कैच किसका था? I think the bowler was there. The bowler was very close to it. बढ़िया कैच, बहुत बढ़िया कैच। अपने बाई और दौड़ते हुए, बहुत बेहतरीन जज करते हुए लिया गया कैच, और एक सफलता वरुण को। Outstanding fielding there. D.Y. Patil, a very cohesive side. The captain, Harakiri is the word. All 5 of them. Oh, you got plenty of overs at your disposal. But look at that. Covered at least about 15 meters. And then finally, Abdul Samad it was. Yes, Abdul Samad it was. Great batting earlier on. And now, after that 40, he takes that brilliant catch. You know, these catches, this fielding raises the spirit of the team. The bowler says, I will bowl my very best as I have never bowled before. And that's happening today. निश्चित तौर से इसी तरह से अगर आप बढ़िया फील्डिंग करते हो, अच्छे कैचेस लेते हो, तो जो गेंदबाज है उनके हौसले भी बुलंद हो जाते हैं। और यहाँ पर वरुण अपने अनुभव के साथ गेंदबाजी करते हुए इस ओवर में भी उन्हें सफलता मिली है। So CAG is in big trouble. If you go back to their performance in this tournament, they played a super tournament so far. They won by 2 runs against Indian Oil, a very strong side. Remember, Indian Oil are led by Aditya Tare, the Mumbai former wicketkeeper. I think he was also a captain of Mumbai's Ranji Trophy winning side, Aditya Tare, wicketkeeper. Then they beat Nirlawn by 7 wickets. You know, go back to the 70s. Nirlawn, who's who? Sunil Gavaskar, Ravi Shastri, Karsan Ghavri, Rahul Mankad, Vijay Mohan Raj, Suresh Shastri. The names are endless. Kiran Ashar. एक नाम जिन्होंने अपनी पहली जिंदगी की नौकरी की है निर्लॉन में, मैं आपसे सुनना चाहूंगा। I know the entire side, great friends of mine. Whom am I missing? सचिन तेंदुलकर। जी हाँ, मफतलाल और निर्लॉन। That's right, yes. But nevertheless, what a side, what a side. But here they lost, as I said, to CAG. Then CAG beat Mumbai Customs. And finally, CAG beat D.Y. Patil Blue in the quarterfinals. But today,
is not their day as of now. डीपीआर बिल्कुल इस मैच को अपने शिकंजे में कर रही है अपने बेहतरीन गेंदबाजी द्वारा. So Manindir Singh is the new batsman. Look at that. Each of the batsmen, Monty, are trying to play strokes as if they are in a hurry to go to the dugout. निश्चित तौर से मिलिंद, ये जो 222 रन है ना, वो क्या पहली गेंद पर नहीं बनेंगे. आपको रुकना है. फिलहाल आपकी जो टीम है वो बिल्कुल मुश्किलात में चल रही है, और मेरा कहना है कि मुश्किल कुछ भी नहीं है इस दुनिया में. तो जरा कोशिश तो कर. Wonderful keeping there from Yogesh Takavle. Loads of experience for him. इस बात पर भी गौर करना होगा, स्टंप के काफी सटीक है. संभावित स्टंपिंग की तलाश में एक स्लीप, एक गली, स्वीपर, कवर और लॉन्ग ऑफ. डीप में खेला है और दूसरे रन के लिए भी आए हैं. It must be a few hours that CAG got a 4 or a 6. I wonder whether they have got a 4 and a 6. ये वही दौर था जहां पर अपने टीम के लिए, डीपीआर के लिए पाटीदार बहुत बढ़िया खेल रहे थे और अच्छी साझेदारी उनकी नीतीश राणा के साथ हुई थी, और फिर कप्तान आए थे और फिर पाटीदार और कप्तान ने पूरी तरह से अपनी टीम की बागडोर संभाली थी और रन्स बनाए थे. क्या इस तरह से सीएजी के लिए कुछ करना होगा? 14.25 seems to be having a problem somewhere on his intestine part, the stomach part. What do they say? A catch there. A catch there for Chakravarti. But look at his spell. 3 for 5 in 2 overs. 51 पर 5 विकेट्स गए थे भारत के 17 पे. कपिल देव ने हार नहीं मानी थी सर. Yes, Napoleon Bonaparte, impossible is never or was never the word in his dictionary. And that's why you say you should never have or the spirit to just keep on doing it till you succeed. Failure is the last word that you should think of. तो क्या कुछ हो सकता है? खेलेंगे मनिंदर? 14.37 difficult and now all more difficult. Well, you asked a question at the wrong time of the day. गलत शॉट. खमियाजा भुगतना पड़ा वहां पर बैटर को, और एक मिली सफलता डीपीआर के खाते में जाते हुए सफलता, और सफलता मिली है कप्तान को, कृणाल पंड्या को. ये देखिए गेंद, और बिल्कुल इसे स्वीप करने गए थे, स्टंप के बीचों बीच आए थे और एलबीडब्ल्यू आउट हो गए. बेहतरीन गेंदबाजी आज कृणाल पंड्या द्वारा. Now look at the body language of the DY Patil side. You know, how much of a difference can it make when you are up there? You're losing, you lose wickets, your shoulders are drooping, your body language is very different, you're sulking, you don't have a smile on your face, but look at the side in the red. एक विश्व विजेता की तरह इस वक्त डीपीआर खेल रही है इस शानदार क्रिकेट टूर्नामेंट में. डीवाई पाटिल का यह स्टेडियम, और इस स्टेडियम में 2 टीम्स, डीपीआर बनाम सीएजी, सेमीफाइनल का ये मैच. डीपीआर ने बहुत ही बेहतरीन शानदार बल्लेबाजी करते हुए 221 रन बनाए. 222 का लक्ष्य. ऐसा लग रहा था कि सीएजी, जिन्होंने क्वार्टर फाइनल में बहुत अच्छा खेल खेला था, इस वक्त कुछ संघर्ष करेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है. सीएजी को अब क्या करना होगा मिलिंद? Well, I have no answer, honestly. 52 for 6, 222 required run rate over 14. Huge task. But, you know, people have climbed Mount Everest without both legs. People have
have piloted an aircraft without two legs, if you remember. Baden. So the word impossible is never there. But surely 52 for 6 is a huge task. जी हाँ, यहाँ से अगर खेलना है तो फिर से एक बार अपने हौसले को बुलंद करना होगा। कृणाल पंड्या और वरुण की जो जो गेंदें हैं उन्हें समझना होगा और खास करके भुवी और प्रिंस पर हल्ला बोलना होगा। ये सब कुछ जो और त्यो पण और परंतु की बातें हैं, इफ एंड बट, ये क्रिकेट में नहीं चलते। तो मैं इस वक्त ये जो कहना चाहता हूँ कि क्या वरुण और कृणाल पंड्या के गेंदबाजी के सामने सीएजी ने घुटने टेक दिए, ये उचित होगा? Abid Mushtaq bowled well, has a task cut out for himself. I'm going to talk of something which starts tomorrow after this over. Oh, what a delivery! What a delivery! Absolutely unplayable. Thank God the batsman Abid Mushtaq, who did nearly attempt to play that. Or he left it, in fact. That's a good thinking on his part. Sanveer Singh. He's got to stand tall there, for sure. अब तक जो खेल खेला जा रहा है सीएजी द्वारा, किसी भी वक्त मिलिंद नजर नहीं आ रहा है कि वो विजयी लक्ष्य का पीछा कर रही है। So end of the 9th over of play, 54 for 6 here for the CAG. 15.27 is the run rate. And I'm going back to the semi-finals of the Ranji Trophy, where Mumbai were playing Tamil Nadu at the BKC ground. And they were 127 for 7. I was there, if my memory serves me right. And then Shardul Thakur got 100 for them. Tanush Kotian and Deshmukh, Tushar Deshmukh, and they got to, I think, 380 odd. So the tail did it for them, and the tail has repeatedly done it for Mumbai this season. So even if they've lost, that's the scorecard for you. 14-5, 0-16. No one has got to 20. निश्चित तौर से मैंने कहा ना कि अंतिम गेंद तक अपने विश्वास को बुलंद रखना चाहिए कि मैं जीत सकता हूं, आई कैन डू इट। अपने आप से बातें करनी है, मुझे खेलना है, मेरी टीम के लिए खेलना है, मेरी टीम के जीत के लिए खेलना है। अगर इस मंत्र के साथ खेलोगे तो जीत सकते हो। प्रिंस आए हैं। That's good thinking, but he continues to start off with what he was doing earlier on. I pity him. He's an excellent bowler. I've seen a lot of him bowl in Mumbai. But today, it just doesn't seem to be getting his rhythm. His line and length is all over the place. He came in at a good time. When, as a bowler, you're seeing 55 for 6, you know that all that I have to do is bowl outside the off stump. Get the batsman to play the strokes. Don't give him the width. Now that's better, but he's found the gap there. So Prince is having a different day today, Monty. जो डीपीआर के 11 प्लेयर्स हैं उनमें से एक ही प्लेयर है जिसके बारे में हम कहेंगे कि वक्त सही नहीं चल रहा है, वो है प्रिंस। देखिए प्रिंस की ये शॉट ऑफ लेंथ गेंद और बहुत ही खूबसूरती के साथ इसे पुल कर दिया। गैप में चली गई गेंद, बाउंड्री लाइन को चूमती हुई। टाइमिंग अच्छा था और 4 रन मिले। फिर से एक बार प्रिंस के इस गेंद को खेल दिया है डीप मिड विकेट, सीमा रेखा के बाहर, सिक्सर। Surely CAG seemed to be getting some gifted runs from the bowling of Prince Badiani. A 4, then a 6-yard shot, hiked this well, timed it well, middled it well, and found the space to perfection. 65 for 6 now for CAG. It's still a huge task in front of them.
सनवीर एक योद्धा, एक वीर की तरह खेलते हुए मिलिंद। Oh yes, remember he got 45 in the last match, the quarterfinals, which was actually instrumental along with Varun Lavande to get them to this stage, the semi-finals. I'm going back to the quarterfinals which they played on this very ground. You must be saying, thank God I've given only a single away. Up to 65 for 6. He's conceded none for 24 in his 1.2 overs. This over has just started. A wide, a 4, a 6 and a 1. So he's got still 3 more to bowl. Sanveer 18 of 14. Can they do this? That's the million rupee question out here for CAG. But DY Patil, their tails are up for sure. So the breaks certainly have been put on there by the DY Patil bowling attack. They surely have performed as an excellent team out here today. In fact, that first loss to Canara Bank has catapulted them to greater heights. And Prince continues to give the runs away to CAG. Perhaps this fact might get them back into the game a wee bit. The confidence surely might get them back. And runs coming by the thick in this particular over. It's conceded as many as 17 runs. Frightfully expensive. And more. And finally, the over will end now as CAG go on to 72 for 6 after 10. The required run rate at 15.00 with the current rate at 7.20. They surely still continue to have a huge task. The successful bowlers out there for the DY Patil. 3 for 11, the captain, and 3 for 5. What a spell this has been for Varun Chakravarti. 3 for 5 into an economy of 2.50. The dream of every team that they want from a bowler for them. अबीद सूर्यांश आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। सूर्यांश की ये छोटी गेंद और इसे निकाला है। देखिए फील्डर को बीट किया लेकिन उनके हाथों को लगकर जो गेंद गई है ना तो स्लो हो गई है, तो गेंद नहीं जाएगी सीमा रेखा के बाहर। वहां पर फील्डर आए और सिर्फ 2 रन मिले हैं। पाटीदार, नीतीश राणा, कृणाल पांड्या और समद ने बहुत अच्छी बैटिंग की थी। देखिए इस गेंद को जो बेबी हुक किया था, फील्डर थे वहां पर। इस वक्त पुल करने की कोशिश डीपीआर बनाम सीएजी के बीच ये जो मैच चल रहा है, सीएजी इस वक्त शोल्डर डाउन है। सूर्यांश
भुवी, प्रिंस, कृणाल पंड्या, अभिनंदन, वरुण और अब सूर्यांश। आगे निकल कर आए और देखिए, जैसे देखा कि आगे निकल कर आ रहे हैं अभी, अपनी गेंद को थोड़ा सा वाइड रखा। लगभग डीपीआर कृणाल पंड्या की टीम सेमीफाइनल के इस मैच को अपने शिकंजे में कस चुकी है। गिरफ्त अगर देखी जाए तो डीपीआर टीम की ही है इस मैच पर मिलिंद। Oh, for sure. There's no question about it because, you know, Monty, when you're looking at 15.31, they need many more of what we just saw, that boundary. Just one or two boundaries in an over, which would mean that you get about 8 or 9. Whereas the asking rate is 15.51. What do you need? 1 6, 2 4s. That's 16. Now that's very difficult to get 2 4s and a 6 in every over. So obviously, I wouldn't say impossible, but a huge task in front of CAG. हमने हमारे जिंदगी में किसी भी बात को मुश्किल नहीं समझा है, और मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि मुश्किल कुछ भी नहीं इस दुनिया में, तू जरा कोशिश तो कर, ख्वाब तेरे बदल जाएंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। Yes, that's why I use the word uphill task rather than an impossible task. Uphill task. I did mention about Mumbai in all the Ranji Trophy games. They were 120 for 6, 140 for 6, and their number 7, 8, 9, 10 or 8, 9, 10, 11 have got partnerships of 300. And that's why they're in the finals from tomorrow. So these are some of course, of the great moments. Great try there. Great try. And that's the word. Don't give up. Try. You'll always succeed. 79 for 6. Suryansh Shedge. But what I like about, while CAG has got a 4 there, the second 4 in this over, what I like about the DY Patil side, whatever I've seen them in this tournament, they have been a very cohesive side. They've played together, they've been a well-knit unit, and this is what you extend to all walks of life. That's a beautiful one. Pitch short, got the width, a ball which has to be given the treatment which it deserved. And that's why they say, Monty, that it starts from your home, family, close-knit family. You have dinner together every evening. You spend time with your children, and then it extends to cricket teams, football teams, hockey teams. It extends to police force, the armed forces, and the nation. देखिए, ये दो टीम्स है, एक टीम है डीवाई पाटिल रेड, उनका ग्राफ देखिए, और लक्ष्य का पीछा करते हुए सीएजी बिल्कुल लड़खड़ा गई है। और छोटे छोटे अंतराल में जो विकेट्स हमें देखने मिले हैं ना, वो विकेट्स कृणाल पंड्या के हैं। एक अच्छी फील्डिंग। किसी भी टूर्नामेंट की मिलिंद शुरुआत होती है, हम 1 2 3 4 मैचेस देखते हैं तो कहते हैं कि भाई इस क्रिकेट टूर्नामेंट में एक बात तो तय है कि कुछ भी तय नहीं। लेकिन फिलहाल जिस तरह से मैच का जो रुझान है, मैं कहना चाहूँगा कि डीपीआर इस सेमीफाइनल को अब जीत सकती है, क्योंकि उनकी जो गेंदबाजी है वो बहुत अच्छी रही। रन्स तो उन्होंने बनाए, एक विशाल स्कोर दिया। They will of course wait the winners of the match which is going on the adjacent ground, Tata Sports Club versus Income Tax. Income Tax, this is their first year in the DY Patil tournament, and how well they've done to reach the semi-final stage. The Tatas are well led by Sujit Naik, the son of Suru Naik, my good friend.
So yes, wonder what's happening in that match. We'll try and get you what's happening out there. But nevertheless, while we're talking of this particular match, you just saw the level of fielding out here. You know, when things go right, everything starts going right. And the fielding has been impeccable. सब कुछ ठीक चल रहा है डीपीआर को. क्या कृणाल पंड्या प्रिंस को गेंदबाजी देंगे? क्योंकि उनका जो विश्वास है वो भी कृणाल पंड्या को चाहिए. अबीद मुश्ताक 7 रनों पर खेल रहे हैं. सफल गेंदबाज वरुण चक्रवर्ती ऊंचा लंबा खेलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कनेक्शन कतई नहीं. 86 6 विकेटों के नुकसान पर वरुण की ये गेंद बस विद द बॉडी से खेलना चाहा. अब जाकर खेला है, बहुत बढ़िया शॉट, स्टैंड एंड डिलीवर. गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, सिक्सर. कमाल का शॉट अबीद मुश्ताक द्वारा. पिछली गेंद पर नहीं मार सके, लेकिन इस गेंद पर क्रीज का अच्छा इस्तेमाल, बल्ले का पूरा चेहरा खोला, मिडलिंग बहुत अच्छी की और गेंद को डिपॉजिट किया. लॉन्ग ऑफ की ओर, बाउंड्री लाइन के बाहर चली गई गेंद. 6 रन मिले हैं अबीद को. 40 रनों की ये पार्टनरशिप सनवीर सिंह और अबीद मुश्ताक. 13 गेंदों में बनाए 26 सनवीर ने और अबीद मुश्ताक ने बनाए हैं 13. So suddenly these two, Abid Mushtaq and Sanveer, seems to have had a wake-up call. Will that wake-up call be good enough for them? Will 92 for 6 be good enough for the CAG? And how we keep on saying, look at that, the number of runs now seem to be mounting for the CAG. Not that Monty D.Y. Patil would be worried, but when a partnership starts flourishing, you always have it at the back of your mind. Are we doing good enough? Are we good enough to have got 6 wickets and allow a partnership to start working? CAG इस वक्त संघर्ष करते हुए, वो कहते हैं ना, संघर्ष जितना बड़ा होता है जीत उतनी ही शानदार होती है. लेग स्टंप के बाहर और ये नो बॉल का इशारा. We have an interesting match on the next ground. Monty Income Tax got 181 for 8. And we'll talk about this particular delivery. Overstepping there. And in turn, Tatas are 117 for 5. They need 65 runs in 30 deliveries. So that's going to be an interesting game. They have the captain Sujit Naik unbeaten on 43. But out here at the main stadium of the D.Y. Patil, suddenly CAG seems to have got back. The required run rate 16.57. It's mounting Monty. Not good for CAG. निश्चित तौर से, लेकिन जिस तरह से ये दोनों बैटर खेल रहे हैं, ये देखिए इस गेंद को पुल करना चाहते थे. बिल्कुल परफ्यूम डिलीवरी थी, नाक के बगल से परफ्यूम देती हुई गई. Yes, the smell of that leather can be very sweet. Oh, that's close. That was close. Could have been wicket number 7 had it hit the stumps perhaps.
96 for 6 now. Watch that. Excellent fielding. Great pick up there. Thought for a moment. Oh no, oh no. Had he thrown, he didn't throw it. Wonder why he didn't. Perhaps he thought that the batsman was grounding his bat and into the crease. Oh, that's it. That's trouble for CAG. Monty, partnership broken at the right time. This surely looks as if the writing is on the wall. Abhinandan wanted to play that, the one which is moving away. Now this is the one which he tried to have a slash or hit a wicket there. What a way to get out, Monty. What a way to get out. जी हाँ, देखिए बहुत बाहर निकल गए थे और अपना विकेट दे बैठे, हिट विकेट आउट हुए हैं। डीपीआर, बस अब ये कहना मुनासिब होगा मिलिंद कि इस मैच में एक औपचारिकता ही बाकी है। So my dear friend Monty, who is the most positive talking guy, or most positive talking person, seems to have given up himself. Now, if he's given up, I wonder what CAG is thinking now. नहीं, मैं हर हमेशा कहता हूँ कि आखिरी गेंद तक मैं किसी भी वक्त में भविष्यवाणी नहीं करता हूँ, लेकिन जिस तरह से जो बैटर्स आ रहे हैं और जा रहे हैं, यानी कि तू चल मैं आता हूँ, ये स्क्रिप्ट, यही कहानी लिख रहे हैं। Very true, very true. You know, that's why I said it looked as if the CAG boys were in a hurry to get back into the dugout and have a chat amongst themselves. Spend time. You know, you spend time at the wicket, runs come. बैटिंग करते वक्त मिलिंद, सीएजी किसी भी वक्त नहीं मुझे लगा कि वो संघर्ष कर रही है, रनों का पीछा कर रही है। मानना पड़ेगा कि कृणाल पंड्या की गेंदबाजी बहुत अच्छी है, वरुण की गेंदबाजी बहुत अच्छी है, लेकिन आप सेमीफाइनल तक आए हो तो आपने कितना बड़ा खेल खेला है। आपके सामने जो गेंदबाज है वो कोई भी हो, नामी गिरामी हो, भारत के लिए खेल चुका हो, लेकिन मेरे पास जो स्तर है, मेरे पास जो प्रतिभा है, मैं उस स्तर पर खेलूंगा। नहीं हुआ ऐसा कुछ। Yes, they've done so well in each of the 4 matches that they've played. While this was a wide there for CAG, you know, sometimes, Monty, luck also deserts you. You know, you have won 4 matches, you played well in the tournament, you had batsmen of the caliber of Varun Lavande and Sanjay who have given them starts in every match. You had Sanveer Singh, who's been their all-rounder. The captain Ankit has led from the front. But it's just that one important day when luck, along with a lot of other factors, is not with you. किस्मत की जब भी बात करते हो ना मिलिंद, तो मुझे 2 बातें याद आती है। एक तो एक बैटर है और एक तो एक देश है। जो कंट्री है वो है साउथ अफ्रीका और जो बैटर है वो है करुण नायर। Oh yes, absolutely. So singles coming there, not good enough for CAG. D.Y. Patil Sports Academy, the team in red, are now putting the stranglehold on CAG. The Comptroller and Auditor General of India, that's the team. They've played here in the past. They've done well in the past, but today the semi-final is just not their day. Traveling all over the place here on that occasion. Ends the over with a bit of a success there. That outswinger which swung away
found the gap. The fielder was perplexed, kept on looking at the ball, travelling past him. But as they say, never go down. Just go down fighting. Even if you do lose a game, make a match of it. And that is what CAG needs to do. At the end of the day, Monty, sadly you have one victor and one vanquished. D.Y. Patil might turn out, and I use the word might turn out, to be the victor. कई मर्तबा हम देखते हैं कि ऐसा लगता है कि औपचारिकता रही है मैच में, लेकिन नहीं, डगलस मार्लियर आए थे, बिल्कुल सारा स्क्रिप्ट बदल गया था, अखबारों में लिखना भूल गए थे राइटर. Why do you go to that match? We keep on talking of 1983 India versus Zimbabwe. And then of course West Indies in the finals. Who on earth ever thought of it? जी हाँ, थोड़ी देर पहले मैंने जब जो 5 विकेट खोए थे, तब मैंने वो उस बात का जिक्र किया था कि भाई जिम्बाब्वे के साथ किस तरह से खेले थे. और अब इस जो वर्ल्ड कप जो खेला गया था, उस वर्ल्ड कप में जो ग्लेन मैक्सवेल ने जो पारी खेली है ना, उसे भला कौन भूल सकता है. Well, the whole world had given up. The Australians perhaps had given up. But let's get back to this match. In the center, D.Y. Patil, the Sports Academy, the team in red, and this boy, Varun Chakravarti, has been the star along with the captain. Everyone has chipped in. 4 of the batsmen, except Aman Khan, got the runs for them, and now the bowlers have lent admirable support. सिर्फ एक रन से यहाँ पर अब कुछ काम नहीं चलने वाला है. डीपीआर धीरे धीरे हौले हौले अपने जीत के दहलीज पर अपना यशस्वी कदम रखते हुए. Straight to fielder. You don't drop these, do you? And Varun Chakravarti strikes once again. He's been like lightning, striking at regular intervals and very effectively. बहुत अच्छी बॉलिंग यहाँ पर खेल दिया था. गेंद हवा में थी, लॉन्ग ऑफ पर फील्डर बिल्कुल तैयार थे, कोई गलती नहीं की, बहुत अच्छा कैच लिया गया, बढ़िया फिनिश. So yes, as they say in English, the writing is on the wall now. All that CAG now needs to do is a bit of an entertainment for our viewers. But if D.Y. Patil go on to win, the red team, the blue team lost yesterday to CAG, 182 for 6, and CAG got 185 for 4. I was talking to some of the organizers here, and they said that we would like both the D.Y. Patil teams to be in the semi-finals. Wasn't to be, but what a way D.Y. Patil Reds have played today. They've dominated every sphere: batting, bowling, fielding, captaincy. They've been impeccable in the field. The bowlers have supported them. The fielders have supported them. And they got a head start there with 221. अपने बेहतरीन गेंदबाजी द्वारा डीपीआर ने सीएजी की हालात बिल्कुल खस्ता कर डाली है, और फिर उभरने का मौका भी नहीं दिया है वरुण चक्रवर्ती ने. The only one who has made a difference to CAG has been Sanveer Singh once again. None for 72 in his bowling spell, but he says, come on, I'll make up a little bit in my batting. 41 of 29. And he will, of course, have to continue to take the bulk of the strike. सीएजी की बात करें तो बस सीएजी के लिए एक ही बात अच्छी रही है, वो है घोष की हैट्रिक. So 14 overs,
CAG needing 222. These numbers, Monty, are only for academic interest, I suspect. 110 for 8 in 14, 18.67. What do you need to do to get 18.67 per over? आकाश से बातें करनी होगी, आकाश को चूमना होगा, चांद सितारों में झूमना होगा, और वो भी हर 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 गेंद पर मिलिंद. Philosopher Monty. 110 for 8. Abdul Samad now for the first time. Sanveer Singh needs to entertain all of us. He's stood like the Himalayas there for CAG. Nearly dragged the ball there. On his stump was Ankit Sharma. They've used as many as 6 bowlers. D.Y. Patil will come in handy when they go into the finals. That's when they go, as I said. Vijay Merchant, remember, said once, no match is ever won. Well, it doesn't really matter. The wides, the no balls, all of these runs. A free hit there as a result of that no ball. You know, sometimes I wonder, Monty, in any grade of cricket, when there's a free hit of a no ball, fielders don't attempt a catch. Never been able to fathom why. Take it. Take it. Always gives you confidence that I was able to grab a catch. बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि जो कैच मिल रहा है तो उसे लेना भी चाहिए. फ्री हिट के जो सारे नज़ारे हैं ना, वो हमने देख ली है किस तरह से क्या क्या होता है. हमने विराट कोहली को लगकर गेंद किस तरह से चली गई, और वो भला वो इंग्लैंड बनाम न्यूजीलैंड का फाइनल कौन भूल सकता है. सुपर ओवर में जो सब कुछ चल रहा था. So yet so much of history in this game, right from the time that the 3 formats were started. Very unusual stroke. T20 has got us to see so much of innovation over the years. IPL in particular, the order of the day. The T20 is the order of the day. Families troop in. Remember, we're going to be live this evening as well for the final. The 2 teams yet to be decided. This tournament under lights, it's a great spectacle. It's fun time. It's a Saturday evening. Families come here in large numbers with their children. And then they, of course, go out for dinner. One more to the total, 114 for 8 and a free hit again. बहुत बढ़िया फ्री हिट का फायदा उठाया. काउदी कॉर्नर, गेंद सीमा रेखा के बाहर, सिक्सर. So yes, some form of entertainment still continues, although the task is beyond their reach. That's a big one. That's a big one. Nearly going to hand and then ballooning out. We're now towards the closing stages of this semi-final between the local side, the host, D.Y. Patil Sports Academy, the red side, against CAG. Every over the run rate is creeping up, not to the liking of CAG, but to this side. Whipping this off his hips there. That's a good attractive stroke to play. Although we have the, I wonder whether I'd call them the tail enders, because with the likes of Sanveer there,
Surely he's not a tail-ender. काफी देर से खेल रहे हैं सनवीर। 32 गेंदों में 48 रन बनाए हैं। कप्तान कृणाल की ये गेंद जो कि लेग स्टंप पर थी, सीधी थी, इसे खेला जरूर लेकिन रन लेने की कोई कोशिश नहीं। डीपीआर कप्तान कृणाल पंड्या। Now is this going to go straight to hand? No, it beats the fielder there. That's a huge blow. That's a huge blow. Coming from Sanveer, he's crossed his 50 now. What a knock he's played. He stood alone there, Monty, and he's made sure that the bowling is not what it looks like. He said, if I can play, why couldn't the others and get those runs? Now this should be straight to a fielder. तो फिर से एक बार कृणाल पंड्या को सफलता मिली है। पिछले गेंद पर आपने देखा कि सिक्सर लगाया था, लेकिन इस गेंद पर एलिवेशन दे बैठे और मिल गई सफलता कृणाल पंड्या को। So losing wicket number 9 at 128 after all the good work that Sanveer has done for his side, caught by Abdul Samad. He's been in the action, batting, bowling, fielding. सनवीर ने जो 54 रन बनाए हैं, अपने टीम का जो स्कोर बोर्ड है उसे सम्मान दिया है। While they lose their 9th wicket, Monty, it looks as if income tax, that's the last one. He knows, or he knew, that it was time of the day to do something for my side. And the fielder there, Abdul Samad, just hanging on to it. So going to the next ground, Monty, income tax or Tatas need 43 runs in 11 deliveries. Sujit Naik is still there on 51. Looks as if income tax might make it to the final and join D.Y. Patil red. It will be their first final, income tax. And what a final, or what an entry into the final it will be for them when they get beating, if at all they do manage to beat Tata Sports Club. But as I said, 11 balls, 43, anything is still happen there. कुछ भी हो सकता है। Sujit Naik, 51 of 30. So here we are now, getting to the center out here. 130 for 9, 4 overs to go. So 24 deliveries. The asking rate now, or the required rate, 23 per over. The last wicket out there, Ankit Sharma and Rajneesh Gurbani. And D.Y. Patil have been a far better side in every department of the game out here in this semi-final. अब्दुल समद अपने नए ओवर की शुरुआत करते हुए, उनकी ये जो गेंद और इसे मिड विकेट में खेलना चाहा और देखिए वहां पर बोल्ड हो गए हैं, तो अब्दुल समद को मिल गई है सफलता और डी.वाई. पाटिल रेड ने 91 रनों से इस सेमीफाइनल के मैच को जीत लिया है। That surely is a big order, winning by 91 runs. D.Y. Patil lost the first match to Canara Bank by 7 wickets. A very jubilant red side of the D.Y. Patil Sports Academy. The local team, the hosts as one would call them. And then from that first loss, Monty, they've been convincing in every match. Second match, they won by 7 wickets. The third match by 6 wickets. And then
the earlier match by 10 wickets. This, of course, by 91 runs. They certainly have been the worthy winners. काफी खुश है अपने इस बेहतरीन परफॉर्मेंस से कप्तान कृणाल पंड्या, अब्दुल समद। ये देखिए ये टीम है CAG। सेमीफाइनल में DPR के साथ उन्हें हार का सामना करना पड़ा दोनों टीमें, और टीम्स के खिलाड़ी एक दूसरे के साथ हस्तांदोलन करते हुए नजर आ रहे हैं। खेल भावना नजर आ रही है मिलिंद। Yes, this is the modern trend. Oh, a happy captain, I'm sure Krunal Pandya must be, for sure, along with the team. You know, no words or adjectives will be sufficient for the way D.Y. Patil, the Reds have played today. They've dominated every department of the game. They've been excellent in the batting department. They've been super in the field, and the bowlers have bowled admirably. This is the way that the match finished with victory.